କେମିତି ଅଛୁ? ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତମେ ମାନେ କଣ ପଢା ହେଇଛି? ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନଟ୍ ଆସ ଆଗରୁ କିଛି ପଢିଛ? କେମିତି କଣ ହେଇଛି? How many of you are completely new? Let me know. କେତେ ଜଣ? ହଁ, ଏଇଠାରେ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ନା ଭଏସ୍ ଟା ବୋଧେ ଇକୋ ଆସୁଛି ବୋଧେ ଏଇଠୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କାହିଁ ନୋଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ପେନ୍ଟା ଏଇଟା ନା? ଇରେଜରଟା ଟିକେ ଓହୋ ଅଛି। ଇସ୍ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏସି ଲାଗିଛି କି? ହଁ, ନା ଆମେ ଅଡିବଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଲେଟ୍ ମି नो ଜୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ପୁରା କହିବି। ତମର ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଟି କମ୍ ମେନ୍ସ ନା? ପିଟି କମ୍ ମେନ୍ସ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର, ମାନେ ଫ୍ରିଲି ମୋତେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତମର ପଢ଼ିଛ, କୋଉଠୁ ଇଏ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବେଲେ ଆୱାର ଥିବ, ସାର୍ କହିଥିବେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ନେବା। ମୋତେ ଖାଲି ଆଗରୁ କିଛି ପଢ଼ା ହେଇଛି ନା? ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି କେତେ ଜଣ नहीं मु सिलेबस अनुसार जी एक्चुअली जदि मु कहबी कि देयर आर फ्यू बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग द ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। आ वर्तमान जमी चेंजिंग ट्रेंड हो तुम देखु एनालिसिस करवा क्लास रे भी मु तुमको क्वेश्चंस भी देवी करने। ठीक अच्छे, द क्लास विल मिनिमम 2 to 2.5 आवर्स। बी रेडी फॉर दैट वन। मझे जी जापर भी कह सर पानी पीबी कि जो मोस्ट वेलकम फॉर दैट वन। बट भितर रहीबार अच्छे है केमती पढ़ा तापर से डिस्क्राइब करी। बट सिलेबस प्रथम मुझे आगे डिस्क्राइब करी सिलेबस अनुसार। आज मुझे स्टार्ट करी बेसिक जिनस मैंने जो कि सब आई ऑलवेज बिलीव इन योर क्लीयरिंग योर फंडामेंटल्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आउ केमती केमती हम जना पड़ोनी क्लास सरजिव है। जस्ट विथ मी आम से अनुसार करवा। प्रथम आज प्रथम तुमको बेसिक्स रोचे। रिफ्लेक्ट हो ना? यहाँ देखा व्हाइट ना? हाँ, व्हाइट ने बेटर है। এটা কেন লিখুনি রে? এটাকু এটা কেন জানো না? আচ্ছা আচ্ছা ওকে। না মোর সেটা অলগা প্রকার আছে হোয়াইট। syllabus for foundation batch। फास्ट मु करी तमे एथर का क्वेश्चंस देखी प्रीलिम्स रे जानिच कि नहीं?
26 number questions has came माने all total मिसे की इथुरु geography और environment रो समस्त फोन गुड़ा silent कर दियो. I guess nothing is important than our study now. Question analysis टा कोडाला देखो फर्स्ट मु देबी सिलेबस रे तमरो वर्ल्ड ज्योग्राफी हला गोटे 10 मिनिट रो गोटे नै होची जोटा से अनुसार रहइबो सिलेबस टा लिखिनियो केमदि फिल्म्स का मेंस रे हम देखिबो हला वर्ल्ड ज्योग्राफी रे फर्स्ट मु नेबी तमरो फिजिकल ज्योग्राफी रे कोन जीवो जियोमॉर्फोलॉजी हला फिजिकल रे फर्स्ट नेली मु जियोमॉर्फोलॉजी एटा लिखिनियो और बेटर तम जियोमॉर्फोलॉजी रे कोन रहइबो एनी गेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ then your rocks and types तापर भी रहइबो earthquake volcano then your weathering and erosion landforms भी तीन प्रकार landforms हला मन रख एटा तुम फाउंडेशन बैच माने पीटी कम मेंस हियर वी आर स्टार्टिंग पीटी कम मेंस दीटा ठीक अछि लैंडफॉर्म्स रे कोन रहइबो प्रथमे फ्लूवियल साइकिल माने वाटर और रिवर then aeolian cycle then outer रहइबो तमरा ग्लासियल है एओलियन माने विंड देन ग्लासियल इटला जियोमॉर्फोलॉजी रा देन नेक्स्ट विल गो फॉर सेकंड रे क्लाइमेटोलॉजी एथिरे तमरो टोटल मन रख geomorphology please make a note of this here both prelims and mains GS both prelims and mains दिटांग रहइबो इठी climatology रे रहइबोनी किंतु ठीक अछि then climatology रे next global pressure system then Coriolis force and its yes any doubt you can ask me freely जे एमती करबो देखो आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड बट मु तुमको इना वर्तमान सिलेबस दोची हैला जेमती पीटी कम मेंस रे तापर देखो जियोमॉर्फोलॉजी इज वेरी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट रे ठीक अछि तो तुम माने जेमती कहबो मोर किछि नै से अनुसार बट मु इटा करबी कि जदी तमे मु पढेबी एबे जिनसटा जदी मु फिजिकल आरंभ करछि ताले तमे मोर भाषाटा को ट्यूनिंग टा को धरि परिबो अदरवाइज किछि माने ये होबनी आउ थरे पढले असुविधा कि हां तम रिवाइज हे जिवो केते टाइम टोटल लिखिबो
देखो ସେଇଟା ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହବ ଟାଇମଟା ଯୋଉ ପଚାରୁଛ this should not be an question to a teacher because I am here ମୁଁ ତମକୁ ତମେ ଯଦି କହିବ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିଦେବି ତମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସାରିଦେବି but all total have the patience this exam is all need about you patience ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ପଢ଼ଉଥିଲେ କି କ'ଣ ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ ତ ଏଇ ଟ୍ୟୁନିଂ ଗୁଡ଼ା ଧରିପାରିବ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ଟୋଟାଲି କ୍ଲୁଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆୱେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ତମେ ପଢ଼ନି ଆଉ ଥରେ ହେଲା जोटा हम तुम पचारदेव आउ थे से जिन बट पेसेंस जदि ता भर मुझे लिखला भर डिसाइड कर जब तुम कर क्लाइमेटोलॉजी आरंभ करी बट प्रॉब्लम हम कारण मुझे जो टर्मिनोलॉजी कहि से टर्मिनोलॉजी प्रॉब्लम हम फिजिकल ज्योग्राफी रु बर्तमान बहुत सारा क्वेश्चन आसला ये तुम देख लो प्रिलिम्स कम मेन्स ये सेम क्लाइमेटोलॉजी दिस इज ओनली फॉर द प्रिलिम्स दिस इज ओनली फॉर द प्रिलिम्स है नेक्स्ट थर्ड रे coalesce force and yeah, then winds and types fourth ray then fourth ray cyclones both tropical and temperate cyclone then आउट तुम आस condensations and its phenomena condensation and its phenomena लिखिने एवढा सब and its phenomena then clouds and types please make a note climatology only in your prelims सब भल कि लेख मो खातार हैंड राइटिंग चेक करे समस्त ठीक है नेक्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड रे ओशियोनोग्राफी this is also only in prelims only in prelims major ocean information water major ocean information right then major ocean then your oceanic current details of Pacific Atlantic and Indian Ocean third ray ocean bottom topography details then worlds straits gulfs etc पचार क्वेश्चन कलम भी करके को गल्फ को जगह ठीक अच्छे कह गल्फ स्ट्रेट्स एक्सेट्रा यहाँ स्ट्रेट्स गल्फ्स यहाँ स्ट्रेट्स गल्फ्स अच्छी देन योर बे चैनल these are the varieties right these are very basics लिखिनी बहुत इंपोर्टेंट है मो वर्ल्ड न चलचे पर्यंत है वर्ल्ड इज कंटिन्यूइंग वर्ल्ड ज्योग्राफी जिते तुम जीएस रे पेपर अच्छी सब वास्ट सिलेबस है ज्योग्राफी बड़ सिलेबस है रीजनल पार्ट को मुझे जाइनी पर्यंत एति सरला
Shall I proceed for the next slide? अच्छा एठी एटा कले आगु जीव ना मु जानि मोर अलगा सेठी ए प्रकार ये तो बहुत छोटियाटा अछि किंतु क्यूट देखा होछि ना ये बोर्ड टा ना अच्छा नेक्स्ट बैक टा केम देखि मु अच्छा 8 है ना 1 2 3 yes 4 रे that is your world vegetation ठीक अच्छे वर्ल्ड वेजिटेशन वेजिटेशन कौन जीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने को वेजिटेशन मुझे धीरे धीरे आज इंट्रो क्लास टा धीरे धीरे मुझे कहीकि मुझे बहुत वेरी बेसिक्स ऊपर मुझे एंटर करी आज क्लास रे एटलास्ट तो सब आनी आई होप yesterday the information was intimated आज मैथमेटिक्स करवा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है देखे भी सब धीरे धीरे रूट लेवल ठीक अच्छे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माने कहा को कहबा इक्वेटोरियल है इक्वेटोरियल को कहा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिस इज एन सिनोनिमस इक्वेटोरियल ठीक अच्छे देन सेकेंड रे योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देन monsoonal forest savanna forest Mediterranean forest then Siberia or taiga forest then tundra forest the major realms of the world tropical rainforest monsoonal forest savanna Mediterranean Siberian and tundra forest ठीक अच्छे वर्ल्ड चलची सरनी पर्यंत क्वेश्चन जमती आसुव तुम निजे देखुव है फिफ्थ ने मु I'll deal the separate world regional yes please next lekha thank you madam then एठी गोटे मु तुम बेसिक्स ने भी एंसिलरीज नहीं एंसिलरीज में लिखिबनी एटा लिखुनी कहीं रे हातरे मत बुझेली जे ओके मोर अलग टाइप ओके मे बी मु नुआ अच्छी बोली मत चिन्ह पानी बोले कि नहीं गोटे बेसिक्स जिनस जोटा कि आज मुझे आरंभ करी बेसिक्स ये आड कर दूसरी देन आई विल गो फॉर द रीजनल देयर हाँ ये है मुझे भी आज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड very basics then cosmology it what basics jibo hela latitude longitude and then cosmology acha sixth re wait ne bhi world regional वर्ल्ड रीजनल ने फर्स्ट major continents of the world
है मेजर continents of the world किए Asia, then Africa, Europe, North America, South America, Oceania. Also, I will cover the Antarctica also. Antarctica. Asia, Africa, Europe, North America, South America, Oceania, माने Australia और New Zealand जो then your Antarctica. What we are going to cover here? We are going to cover here your ए part रे their physical, vegetation, climate, mineral resources और economy माने से continent रा economy, people है ना and demography, people and demography. लिखिनी बेसिक्स आगे प्रथम सब जिन मन को रोड मैप टा बहुत इंपोर्टेंट. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रेटेजी है अभिमन्यु सब जानी था कि स्ट्रेटेजी जान नथला बोली बाहर को आस पाइलानी. सिविल सर्विस है से भाया कोटे बाबू physical, vegetation, this is vegetation, then climate, climate, but speed looks so it looks like Mandarin. Mandarin कहाँ रहा ये script? Who said? China. Very good. China. मझे मझे क्लास रे हस मजा सब ता संगे भी पढ़थिबो पाठ थिबो एमते मु जानि गोटे कंट्री कहबी मलेशिया. राइट मलेशिया सुनछ कौन था कैपिटल? किसी धीरे धीरे भाव कि सार आमर क्लास रे ये बाहर सार सांग भाया क्लास भितर सब जिन कर बट पाठ पढ़ा स्टडी इन ए वेरी स्मार्ट वे. डोंट ओवरलोड योरसेल्फ दैट मते इतना पढ़ियार अछि मते करियर अछि वेरी बेसिक्स में किसी अलग पचारे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया. अच्छा छाड़ा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? यस Kuala बोधे हु सेड इट? yes it's Kuala Lumpur. टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड रे कितने? मुझे किसी वेरी बेसिक्स ने भी ज्योग्राफी रे मु तो बहुत बड़ जिंस किसी बड़ जिंस पचार छी वेरी बेसिक्स में पचार छी. How many total number of countries are there in the world? 193. Which two countries recently ratified by the United Nations? First question, मन रखो क्लास रे क्विज करे मु पचारे. First question में पचारे how many total number of countries are there? Second, how many countries are ratified by the UN? That means they have got ratification from the United Nations. Third, how many countries are recently included in the UN list? Inter question. चल भाव तापर मौसी this is complete है ना. Third, this is हमें वर्ल्ड रे साले ठीक अछि. This is your prelims come once geomorphology. This is prelims. This is also only prelims. Then world regional. This is also in prelims. This is only in prelims. This is also prelims.
दिस इज ऑल्सो प्रिलिम्स ठीक अच्छे ता माने प्रिलिम्स का मेंस रे वर्ल्ड ज्योग्राफी रे कौन हमें देखिले ओनली जियोमॉर्फोलॉजी दैट इंक्लूड्स इन मेंस रे थर्ड वर्तमान आसला इंडियन ज्योग्राफी सिस्टमैटिक रे जीव तमे देखिबो हैला से इंडियन ज्योग्राफी राइट इंडियन ज्योग्राफी this is a chapter where we will go for both it covers prelims come mains क्लास रे मु देबी लिखिबा पई हैला सब माने क्वेश्चंस तमे ऑब्जेक्टिव करियो सब्जेक्टिव ठीक अछि नेक्स्ट मु देबी लिखिबी आनी की देखिबा दरियो वेरी स्मार्ट वे रे पढ़ दी जण दौड़ती गध भी दौड़े घोड़ा भी दौड़े बट घोड़ा जीते बिकॉज ही इज स्मार्ट सिंस यू आर the would be the bureaucrats of country so you have to be approach should be like that correct Indian geography कौन नबो प्रथम लेख physical हैला सॉरी फिजियो हां इट physiography of India कौन जीव इथरे physiography of India रे Himalayas and the effect second and the effect अरे they are spelling में भूल लिख ली बोले THERE ना ठीक अच्छे what is the difference of that one THERE and THEIR लगता ना सर इतनी सिली क्वेश्चन कौन पचार आम सब पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी करके सर हम कौन एमती पचार देयर मीन्स THEIR माने सेमानंकर माने इंडिविजुअली सपोज देसन कलेक्टिव पीपल सपोज मु कहली कि द इंका सिविलाइजेशन सपोज लेट्स से इन लैटिन अमेरिका इंका सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दैट टाइम देयर कस्ट्यूम्स और गेट ऑफ इज सिल्वर ऑर्नामेंट्स माने सेमानकर दे आर माने सेटा गोटे हला माने यू आर इंडिकेटिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग बीइंग्स एंड THERE मींस नॉन लिविंग बीइंग्स एमती करा जाय काहे कहूची राइटिंग इज द मेन थिंग तमर कहबी धीरे धीरे आसबी केमती राइटिंग करिवो स्ट्रक्चर्ड करिवो वेयर इज ए एंड द आल्सो काउंटेड एज एन वर्ड सेही जिंस भी कहबी प्लीज रेज योर हैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर बीइंग हैबिचुएटेड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स ओनली वन गाय oh my goodness two तो मैं धीरे कि ना कहीं उठे जा it looks like as if माने ये बढ़िया माने only one ठीक है okay I'll climb to that one अच्छा माउटी पूर्वर कहले इंका सिविलाइजेशन ने बड़े एमती बाहर गेला कहल ना इंका कहल वेयर इज इंका के जंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल अच्छे नोबडी ए थिले भी कहीं कहू म नहीं थिली कहीं कहू कहीं नाम नबू कौन पे नहीं इंका सिविलाइजेशन वंस अपॉन ए टाइम दैट वाज फ्लोरिश्ड इन बोलिविया वेयर इज बोलिविया व्हाट इज इट्स कैपिटल लगुनी बहुत जिन जानिया को हमको के जन कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ुछ देखो मु बहुत माने वेरी डेप्थली जिनस गुड़ा नहीं कि आई बिलीव ऑलवेज दैट वन सिविल सर्विस इज एन एग्जाम ऑफ योर इंटेलेक्चुअल्स एग्जाम्स इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट टू ओनली द एक्वायर द नॉलेज इट्स ऑल अबाउट द विजडम मु तुम केबे अलाउ करिबिनी एज लॉन्ग एज आई ऑलवेज स्टूडेंट्स मन को इटा कहे कि ऑलवेज थ्राइव फॉर द विजडम डोंट गो फॉर द नॉलेज ओनली कारण ये एग्जाम तो नहीं तुम डायरेक्ट +2 +3 भाया डायरेक्ट क्वेश्चन आसो लेख लाप्लास करेक्शन दे रांपी देगल पूरा घुसी गल ठीक अच्छे भाव इंका सिविलाइजेशन कोठी मु 5टा क्वेश्चन पचाली 5टा क्वेश्चन आंसर मु पाइलिन क्लास बोलिवियर कैपिटल कौन ता भी जान पाइली 6टा क्वेश्चन ओके बुरुंडी बुरुंडी इज एन कंट्री इन अफ्रीका जार कैपिटल है बुजुम्बुरा बोलिवियर कैपिटल ला पाज
ठीक है, I'll come back. Next, Himalayas and their effect. Next, please note it. Himalayas and their effect. Then physiography of, then triangular peninsula of India. Physiography of triangular peninsula. Triangular peninsula रे बहुत जिनस आसीबो हला खाली लेखिने हेबे. Then drainage system. Drainage system of India. माने drainage system माने river system. Drainage माने river system. Drainage or river system. एथिरे तमे पाइबो both Himalayan and Peninsula. Next ठीक अछि. तपले कहबी next your vegetations of India. Vegetation of India. Then climate of India. ठीक अछि. ड्रेनेज सिस्टम को मु डिवाइड करछे. ड्रेनेज सिस्टम रे पेनिनसुला और हिमालयन. Can say तले पढला बेले कहबो because they are the characteristics. They are the characteristics. Here we are mentioning their particulars of regions को जगह रे. जेमते मु कहबी कि एठी मु देखैली तमे ठीक अछि. एठी मु देखैली that is your विंध्या को नेली. विंध्या ऊपर को हला तमरो पेरेनियल, एठी हला नॉन पेरेनियल. ठीक अछि. वर्तमान पेनिनसुला और एक्स्ट्रा पेनिनसुला कह जिवो त. ठीक अछि. सो क्लाइमेट लिखलो. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Next, secondary. Second continue है. Then climate पर then your monsoons of India. Monsoons of India. Then agriculture of India. Then गरम लगुच ना भितर ठंडा लगुच. चल agriculture of India. Then इथरे जीव तमरो crops and their diversification. Then crops and their diversification. Then your agro industries. Continue. ठीक अच्छे. Second है economic geography of India. Economic geography or commercial geography of India. Economic geography और commercial geography of India. ठीक अच्छे. कौन इतरी जीव
different mineral resources of India. एथरे कौन जो metallic minerals, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic and non-metallic. Shall I switch on? आगु जी metallic and non-metallic. Sure. ठीक है जी. Then एथरे जो कौन metallic and non-metallic रे जो metallic and non-metallic रे कौन जो metallic ores रे iron manganese chromium bauxite iron manganese chromium bauxite copper asbestos sorry asbestos दरकार लिख दिया asbestos nickel gold diamond silver है then এটা গোটে পার্ট গলা then fossil fuels in India fossil fuels रे asbestos coal natural gas coal natural gas है coal natural gas fossil fuels रे coal natural gas and the related geological deposition and their geological deposition and their related river basins. Then related industries, related industries. Other repeat kuch iron, manganese, chromium, bauxite, copper, asbestos, nickel, gold, diamond, silver. Here you find coal and natural gas, related geological depositions and the related river basins. Next, your related industries. Correct? Shall I proceed? Next. Dude, in some chadi dele. Idi agodi jinse lekha. Geological time scale. Geological, this is very important to question pachar chale. Geological time scale
ऑप्शनल अलग प्रकार जीएस अलग प्रकार जीएस रे धर जमी क्वेश्चन पचार ड्यूरिंग विच पीरियड मिडिल हिमालयस हैज इवॉल्व्ड formed 2022 OCS prelims during which period geological middle Himalayas has formed जमती Eocene है जियोलॉजिकल टाइम स्केल आम कौन कह जियोलॉजिकल टाइम स्केल जमी कह कि प्री कैम्ब्रियन पैलियोजोइक मेसोजोइक सेनोजोइक जमी कह कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल रे है एराज जमी कौन कह एराज एपोक्स है एराज एपोक्स एगुड़ा सब रही फॉर एग्जांपल मु कहली योर दिस मेसोजोइक एरा फॉर एग्जांपल मेसोजोइक एरा गोटे जमी बुझाऊँ क्वेश्चन केमती पचारे है यूपीएससी क्वेश्चन कौन पचार जमी पचारे तुमको ये भी बर्तमान सिलेबस सेम जमी मुझे कहबी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द किए डेक्कन प्लेट्यू क्वेश्चन पचार ऑलरेडी कि ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया हैज फॉर्म्ड there can be two questions of this Mesozoic era and co epoch रे it is Cretaceous क्वेश्चन पचार तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अच्छी 2022 रे पचार थिला कि हिमालयस के 21 ना 22 रे हिमालयस इवोल्यूशंस केमती हेतला को पीरियड रे हला से जिंस कवर हो ठीक अछि एक खाली मेंचे पढ़ी गल हबने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ीबाटा बहुत जरूरी नले एते सिविल सर्विस रो सिलेबस जस्ट लाइक एन ओशियन ने पैसिफिक ओशियन जंती जीव तळु को बुड़ी की पळेबा तथापि सरीबनी सेमती सही बडे सो कोनटा न पढ़ीबाटा बहुत इंपोर्टेंट मेंचे गुडा पढ़ले किछ हबनी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सब बडे हम्बल हबो हला द मोमेंट तुम भितर एरोगेंसी आसीला तुम आंसर रे सेटा रिफ्लेक्ट हबो 100-200% मोर 12-15 वर्ष भीतर कैरियर में देखुची पिलान किसी दरकार समस्त जड़े दिने आसन दिने उपरक जावा इतने कौन मन अहंकार मुझे किसी दरकार नहीं द मोर यू हम्बल द मोर इट रिफ्लेक्ट इन योर आंसर वेरी मन रख तुम थॉट लीड्स टू योर एक्शन एंड एक्शंस योर कर्मास रिफ्लेक्शन दैट्स वेरी फाइन बुझे कि नहीं ठीक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिख लो नेक्स्ट मुझा आसनी पर्यंत आने बहुत जिन मन पड़े जी है भल लगुच जिन गुड़ा जाणी सब फंडामेंटल पढ़ सब यह भाव कि मुझे पढ़ी व्हाट आई कैन यूटिलाइज मुझे केतरा क्वेश्चंस करी मत केमती इंटरव्यू रे हेल्प कर मुझे लिखिपारि दीटा जिन गोटे तीर रू तीन निशाना मार हाउ आई कैन एबल टू सॉल्व द योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हाउ आई कैन एबल टू राइट द क्वेश्चंस हाउ आई कैन ओराली पचारे मुझे कहीपरि दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी पुणी से कहले सर कौन न्यूटन पाक पड़े न्यूटन सेकेंड कौन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कौन एफ इजिकल टू एम ए ना आउ एटा कौन इजी कहते ई इजिकल टू कौन माने सेटा भी हम लाइफ रे भी एप्लीकेबल है नेक्स्ट आगु जीवा लिखि दउछ एगुडा सब डिपोजिशन है फॉसिल्स फिल्स नेक्स्ट देन योर एंसिलरीज पार्ट ऑफ इंडिया एंसिलरीज रे कौन जीवो एंसिलरीज ऑफ इंडिया इंडिया रे कौन कवर हवा ट्राइब्स ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड भी मुझे करदेवी है ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड भी है छाड़ी ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड भी रहिबो ट्राइब्स ऑफ इंडिया गोटे ऑल्सो ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड भी ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड यहाँ गोटे भेराइटी जीव ट्राइब्स ऑफ इंडिया ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड ए हाँ देन WLS wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, then है को इंडिया रे केतना टिल है टिल रिसेंट है
till recent incorporation. Next, then hydro energy, HEP माने HEP को जगह रे है ना, HEP is in India. HEP sector, solar energy, wind, ठीक अच्छे। ये तो खाली मु देली माने इंडिकेशन पढ़ेला बेलू आहरी बढ़ी जीव बेसिक्स है। नेक्स्ट सी रे ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा के कौन हम अगेन फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा सेम जिनस फिजियोग्राफी ऑफ ओडिशा, देन क्लाइमेट ऑफ ओडिशा, then vegetation, mineral resources, sorry लिखी दे mineral resources of Odisha, then rivers of Odisha, then industries ना बेसी बड़ नो industries, ये आउट जिनस सॉइल्स ऑफ ओडिशा हम छाड़ देले सॉइल्स ऑफ ओडिशा, ठीक अच्छे। ये गोटे जिन कहीदे रिवर्स पढ़ला बेले मिनरल रिसोर्सेस एटा पढ़ला बेले मुझे रिपीट करी कहीं ऑलरेडी इंडिया पढ़ला बेले मुझे कवर करदेवी अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग किसी दरकार नहीं। आई बिलीव इन स्मार्ट स्टडी कम पढ़ा बेसी पढ़े से टाइम रे कवर कर अननेसेसरी स्ट्रेच करी किसी लाभ नहीं खाली देखे हवा गोटे जिन तुम आगुरी भी कहीदे मो क्लास रे वेरी डिसिप्लिन गोटे सबू कर निज भीतर केबे भी गर्व अहंकार वेरी हम्बल रुह सब कहीं तुम माइंड जमती तुम अप्रोच भी से हम कथा कहबार डिसिप्लिन आरोगेंट बिल्कुल भी होनी मुझे जब तुम ये से पृथ्वी कहीं पलैले अलग ग्रह को। सो नेवर बी आरोगेंट गोटे ब्यूरोक्रेट्स सब परीक्षार लक्षण है सिविल सर्विस यू आर नीड टू बी हम्बल बुझ कि नहीं पेशेंस परसिवरेंस बहुत बड़ जिनस एटीट्यूड बहुत बड़ जिनस पंक्चुअल हुआ जदि मुझे कटक जेहेतु मुझे आइल तुम जान चाहिए ठिया 10 मिनिट गाड़ी पार्क ठीक हुए समस्ते समस्त एडजस्ट कर सब जिन के मैंने रिटालिएट करनी बट एटीट्यूड सब ठीक रखियो कहीं मुझे कहूँ तुम हैबिट से अनुसार लिखाटा तुम मेन है मन को प्रिलिम्स इज ए रिजेक्शन राउंड मेन्स इज ए सिलेक्शन राउंड तुम एटीट्यूड ही तुम मेजर पहचान सिविल सर्विस एग्जाम इज ए विन विन सिचुएशन तुम लाइफ में बहुत किसी तुमको शिखे बट एटीट्यूड इज फर्स्ट बहुत जन मैंने केवल निज भितर ही ख्याल कि मुझे बहुत बड़ मुझे बड़ जे मो मुंड जाकि बाजुची जुपिटर रे है सेमती के आरोगेंस हेनी आरोगेंस है मैंने लाइफ स्पॉइल even if you are selected you cannot able to perform in your service also I have n number of students more than सब district गोटे बस still they are in contact थोड़ा हम्बल हम हम्बल मुझे तुम कहीं कहूँ 2000 मार्क तुम लिख मेन्स रे बहुत इंपोर्टेंट तुम हम्बलनेस ना तुम आंसर हेनी लिखिपर बिल्कुल
तुम भाई नॉर्मल 5-6 क्वेश्चन पचार कह मुझे लिखा को 2 लाइन देवी तो धरी पार बट से मो जॉब मो जॉब है कि तुमको माने कड़ फुटेवा हाउ टू मेक ए ब्लूम तो ये जो हम्बलनेस बहुत जरूरी आरोगेंट बिल्कुल भी हेनी आम जी जानी आम नॉलेज विजडम जी ना गोटे यूनिवर्स टिके जमा माने बहुत छोट आम सो ऑलवेज बी ओपन टू यू नो टू माने रिसीव द एनर्जी वंस यू आरोगेंट माने तुम भीतर पशिबनी एनर्जी so there are some articulates basic articulates how you go for the strategy for this exam so that is what civil service is all about the attitude helle aptitude habo so this is eta moita कहली there is no repetition india पढ़ेला बडे सेम जिंस हम रिपीट करिवि हला सेम जिंस इतरे हे जिवो so unnecessary time kill हबो दरकार नै there are many other subjects also so mo authre mo review करनोची सो एठी मु आगुटा ऐड कर दोचे रॉक्स अर्थ साइक्लोन एठी एडिशन एथरे भी सॉइल्स भी मु नै ना एटा गला वर्ल्ड रो सवाना वेजिटेशंस वर्ल्ड रीजनल देन इंडिया रे हां एठी मु आगुटा छाड़ देची सॉइल्स ऑफ इंडिया एटा खाली गोटे इंडिकेशन जो आउरी सिलेबस आउरी रहइबो एटी आउरी कम से कम 25% ऐड हो जति मु 7 पेज लिखिली बहुत क्वेश्चंस ओरिएंटेड सब वर्ष क्वेश्चन मैंने चेंज कर सॉइल्स ऑफ इंडिया अच्छा बर्तमान मुझे खाली गोटे कही दूसरी केमती तुमको देखो हाउ इट इज इंपोर्टेंट व्हाई यू ब्रिंग वर्ल्ड रीजनल मुझे तुमको गोटे सेग्रीगेशन देदेवी नेक्स्ट क्लास रे कि ए वर्षर क्वेश्चन केमती केमती आसला कोठ ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट इज बिकमिंग एंड वेरी रिलेवेंट एज पर द यूजीसी नीड यूजीसी जानथो यूनिवर्सल ग्रांट कमिशन है से माने चाहूचंद कि जो माने ब्यूरोक्रेट होंतु से माने जानंतु गोटे देशर को जगह माने व्हाट इज द क्लाइमेट व्हाट इज द वेजिटेशन व्हाट इज द मिनरल रिसोर्सेस व्हाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज डे बाय डे दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ए वर्ष पके प्रति वर्ष आसे 35 रु 40 भीतर एथरका पकेचन से माने 27 टा क्वेश्चन 7-8 टा कमे दिचन ठीक अछि ज्योग्राफी रु थिला तमर पाखा पकी 18 टा एथरु थिला 9 टा 6 टा कि 9 टा ए भळे एनवायरनमेंट रीजनल मु काहे कि सेपरेट नोची कॉन्टिनेंट्स ऑल कॉन्टिनेंट्स आई एम टेकिंग सेपरेटली रीजनल ऊपर एथरा हम देखले गोटे क्वेश्चन तोर पकेइथला मानिनी क्वेश्चन पेपर सेथरे समान कोन करचंदी एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका तीनटा को मिसेइचंदी गोटिए क्वेश्चन 4टा स्टेटमेंट करचंदी क्वेश्चन पकेइछ कैन यू इमेजिन हमको पढ़िया भारी सुंदर लगे किंतु हां एटा तो हे जिवो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मु पिलांग देखे हम एटा तो चा पिउथबे हम एटा कोन माने निज को खुशी करे हम कहि कि वर्ष पळेबो इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल हम एटा गोटे पचार देबे कोन माने अपने आप को माने जो सेल्फ अपीजमेंट प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट वन बी वेरी प्रैक्टिकल हम सेटा कोन जानि भारी काडवाटा बेसी हे गेला एमती करी करी हम कहि कि केतल पछु गने बारी 3 वर्ष पळेलानी मो सांग सब पाई कि बाहाई कि पळेनी मु एमती बससी एठी हाय रे कि खुशी नहीं बाहर कथा कहले माने कि खुशी नहीं दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड पाठ पढ़ा भी ता संगे दरकार ओके एमती हस मजा खट्टा मीठा चलियो वर्तमान मु आरंभ करबी कोठू बेसिक्स रो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रो काहे कि व्हाई चूज मते पचारियो आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन अछि 2000 ओसीएस 20 रो खोली के देखो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पचार छन वेरी बेसिक्स तुम भावनी ये प्रथम तुम मुझे कहीदे फिजियोग्राफी रे बेसी टाइम नब क्लाइमेटोलॉजी रे नब ये फिजियोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पर देखिए धाई धाई सर सब हाँ इंडिया रे टिके कौन सी जिनस को मुझे थे बुझीपारे मुझे 10 थर कहि है किंतु असाइनमेंट क्लास रे देवी करिवो ताकू बुझिवो करिवो रेगुलर एनसीईआरटी पढ़ी के आसीवो दैट इज द बेसिक्स थिंग्स नो कंपैरिजन नो लेग पुलिंग नो वैनिटी माने किसी सेमती पंपस सुन मुझे कर देथिली मु शेयर कर देथिली मु उड़ी की पळैथिली किंतु खसी पड़ली उपरु हैला से गुडा नो डिस्कशन नो सेल्फ अपीजमेंट ओनली ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ एंड बी वेरी प्रैक्टिकल पिला इंटरव्यू क्लियर करी की भी एथर का प्रीलिम्स है यू नो दिस वन देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स में देयर सब बड़े ग्राउंडेड रो प्रैक्टिकली डील करो सेल्फ अपीजमेंट बंद कर मुझे मु रावण रो गोटे साइड मुंडटा थी कि गली पड़ली है से डोंट डू दैट वन यू विल बी इन मेस
मन रख तुम एकला बसिक हॉल रे तुम ही एग्जाम दब नोबडी इज गोइंग टू राइट फॉर यू द एग्जाम मैंने तो काश सार आम पे बस जाते कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ता पूर्व सरला एगुड़ा सब मोर क्वेश्चंस मुझे पचारि आ मन रख मु क्लास रे गोटे जिन आगु डिल कर बहुत फ्रेंडली सब जिन करी है पाठ न पचारे आटीट्यूड प्रोब्लेम है तुम पढ़ारे कम रुह मुझे तुमको उठेदेवी आटीट्यूड प्रोब्लेम है मुझे छाड़बी नो गसिपिंग नो व्हिस्परिंग पर चर्चा पर नंदा बिल्कुल नहीं बिल्कुल मुझे एंटरटेन कहीं मुझे जानी एग्जाम को अफेक्ट करियो बहुत मुझे करी मुझे करी मु उल्टिकी पड़गली कि मेरिना ट्रेंच उठीगला उपरको है सेमती नहीं डोंट डू दैट वन कहीं यहाँ सब बड़ हडल्स तुम प्रिपरेशन फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आसे आज पचारि हाउ मेनी क्वेश्चन कौन थी आज क्वेश्चंस नहीं कि क्लास रे मैंडेटरी मुझे आरंभ करुच्ची मो क्लास जहाँ भी स्कूल एटलास्ट इज इंपोर्टेंट समस्त आनीच दिस वन स्टूडेंट नो स्कूल है ऑप्शनल दीटा दरकार बट एठी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे तुमको पचारि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर तापर मासी फटाफट कह हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड केते कहला नाउ द आंसर इज दैट 193 और 195 तुम होम असाइनमेंट देली मु पुणी गुरुवार अच्छे आसबि से दिन मते तुम कहबो मु काहे कि कंफ्यूज रे पकेली हु आर द टू रिसेंट कंट्रीज दे हैव एडेड मे बी अल्बानिया मे बी यूक्रेन मे बी पैलेस्टाइन सेटा तुम लुक आउट देन है इन द वर्ल्ड सॉरी हाउ मेनी एटी मुझे भूल लिखी आई एम सॉरी how many countries are there how many countries are there in the UN list एठी मु कहली एठी के करो UN list second question है जोड़ा लिखी थी how many countries are there in the world एग्जाम ओरिएंटेड पाठ पढ़ खाली पढ़ले हबनी सेमती यू हैव टू वेरी स्मार्ट आज का डेट रे से टाइम गला सिविल सर्विस वर्तमान तुम यूपीएससी सिलेबस में देखुन हाँ गोटे जिन यहाँ कि तुम डिफिकल्टी लेवल से नहीं यूपीएससी जमी 100% डिफिकल्ट तुम 50% पाच बर्तमान कहीं किसी ऑप्शन ना रिजेक्ट कर नहीं रिजेक्शन कर फिल्म्स रिजेक्ट कर एत पिला दौरान है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पचार हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड है तो यहाँ मत के कहला आंसर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन टा नो 205 और 206 असाइनमेंट खाता गोटे अलग बन क्लास रे लिखिला बेले एति रहिला 2 ରୁ 3 सेंटीमीटर छाड़िबो साइड रे देन करिवो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दिया होछ कहबो जेमती मु कहबी रेगुलरली आई एम स्टडिंग दिस वन मोर गोटे आज की 25 वर्ष हैबिट दिल्ली पाठ पढ़ला मुझे एगुड़ा करे इंजीनियरिंग पढ़ला बेले किटे सब धरिक बसथि दिस एन रेगुलर हैबिट आई एम नॉट सेइंग दैट वन विल गो फॉर द हिंदू पेपर फर्स्ट यू गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस और अदर तापर यू स्विच अप टू दिस वन हिंदू लैंग्वेज टिके टफ बट एमती नुहे टफ 3 मास भीतर कोप अप करके आगू बढ़ फिजिकल स्टडी कहीं मुझे कहूँ पढ़िया कहीं तुम एग्जाम ओरिएंटेशन है फिजिकल आज 250 वर्ष तले जहाँ थी आज भी से बुझ तो यहाँ है तो बर्तमान मत कह ठीक अच्छे तुम निजे असाइनमेंट खाता गोटे अलग कर देख मुझे कहीं कहूँ से खाताटा ना तुम इंटरव्यू बेले कम दब केमती मुझे कह पॉकेट डायरी बनाओ कह धीरे धीरे देयर आर सो मेनी ट्रिक्स एंड गुड हैबिट्स ओके ना कम टू द क्वेश्चन तुम निजे कर मुझे किसी कहूनी आंसर तुम निजे कल्चर कर गूगल भी मारुच जदि एनालिटिकल भाव में देख कौन पे यूएन जर्नाल पढ़ यूएन रिपोर्ट पढ़ जो भी आस सब एनसाइक्लोपीडिया जो तुम नेट आस पढ़ कल्चर कर खाली नुह जो प्रथमटा देखी यहाँ कल्चर कर सब जिनस डेप्थ को जाओ मत जन कहला सर यहाँ तो गूगल अच्छे मुझे गूगल तो कैंसर मेडिसिन मिलूँ डॉक्टर पाक जा कौन दरकार नहीं अच्छा मुझे कहीं कहली ये जिनसा
मत एनालिटिकल एठू बाहर इफ आई एम कंपेयरिंग दिस क्वेश्चंस नाउ if I said that total number of countries 205 let's say and total number of countries listed by the UN is let's say 195 let's say ମୁଁ କହୁଛି 10ଟା कंट्री कमिला let's say कौन पे एमती ହେଲା भाबनी जे ब्यूरोक्रेसी एग्जाम दौचो माने सबले टिके माने सबले यू आर हैव सम अपलिफ्टेड ब्रेन तमनकर डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी हेबा दरकार कहबटू बेसी साइलेंट रे बुझी देबो जिंसटा हे जिवो धीरे धीरे एटीट्यूड मु करि देबी कहीं मत 10टा क्वेश्चन 10टा कंट्रीज कहीं के हेलानी व्हाई दिस थरे कोठी कोठी पढौतले लोटी के पढतले सेपटू yes for what criteria भाबो निजे माने भाबो बेसी हैला आउ जिंस ऊपर सब जानि छ समस्ते एटा अमृतांजन रखे पल्ला आड़े मटे टिके लगे जिंस हां वेरी फैमिलियर फ्रेंडली भले भाबियो क्लास रे हम बस जवाब पन सर्टेन पॉपुलेशन एटा ओडिया गीत अछि ना भाबुची बेसी लेखुची अल्प नहीं बढ़िया लागे मसे गीत नहीं भल लागे नहीं अरे भल लागे तू तो खुशी हो तू लिखुले काऊ व्हाट्स गुड नेम ओके यस ओ माय गुडनेस बस वेरी गुड ठीक अछि हां ठीक अछि एमती चलन दाई क्लास ता सर जांदनी गुल्ली गप्प सुने हां को एटा पचारा मु सब मन रखि जा क्वेश्चन पचार छी यस व्हाट्स गुड नेम सीताकांत you said it because of the population right because of the population आउ कौन देखो UN listed माने why more question is that why the 10 countries are not listed by the not UN listed कौन टा ही पार्थिव questions रो why question number 1 हला UN there are certain criterias कौन कौन criterias number 1 है geographical area then population geographical area population जमती गोटे क्वेश्चन तुम ये सब देख सु कि असुविधा नहीं सपोज आई एम टेकिंग अबाउट दिस ओशियानिया राइट सम ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया जस्ट इट देख इट जोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन जमती मुझे सपोज ओशियानिया रे सपोज मुझे गुआम आइलैंड दैट इज ओशियानिया तीनटा पॉलिनेशिया मेलानेशिया एंड माइक्रोनेशिया सपोज नेली गुआम आइलैंड इज नॉट लिस्टेड लेट्स से फॉर एग्जांपल्स Fiji is listed in UN Fiji रा कैपिटल है सुभा गुआम आइलैंड है नहीं कहीं जोग्राफिकल एरिया को से सैटिस्फाई करनी पॉपुलेशन को सैटिस्फाई करनी बुझेला जेंति मु कहबी कहीं UN देबनी UN जतले नेला जेंति वर्तमान सुदान रे कॉन्फ्लिक्ट चलछि सुदान रे कॉन्फ्लिक्ट चलछि वर्तमान जान छ कि नहीं सुदान रे वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट चलछि यस प्लीज Hello, how are you? Very good. Boss, I have met you already on the first day. Please take your seat. कथा हो, हाँ देखो. So हम कौन देखिले कि 10 countries are there जोड़ा देखिले your area and geographical area and population. मुझे for example कहले कि Fiji और Guam Island और जमती कहले से listed नुह. ता रीजन कौन है ता रीजन है कि यूएन जदि लिस्टेड कला ताले कौन दबो एड पहुंचेबो यूएन हैज टू बी सेंड द एड माने हेल्प इन नेचुरल कैलामिटीज सपोज मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज दे आर नेचुरल कैलामिटी जेमते सीवियर ड्रट सिचुएशन है अफ्रीकन कंट्रीज जदि मैं कहबी मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज इफ आई से if this is the Sahara, if I say this is a country that is named as Mali.
Mali is an sub country Africa रे this Sahara desert African country Mali रे बहुत सारा माने there is an hydrological drought and basically African countries are mostly famine पानी नहीं जेटी even if Sahara desert also cover 50% हैला तो सेही जगह को जदी एड बना हला ताले UN is listed ताको बाध्य सेठी दबा पई कोन हेल्प वेदर द खाली सेटा नो नेचुरल कैलामिटीज हो कि तुमर ड्राफ्ट सिचुएशन हो से दब किंतु ये जो कंट्री गुड़ा से माने क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंते से जो गुड़ा भर वेरी बेसिक जिंस इंटरव्यू पचाले इशू आंसर दो ब्यूरोक्रेसी जानो डेप्थ रे जानो कोन पई एटा दिया हिनी कोन पई करा होची ठीक अछि वर्तमान काली पहर दिन पेपर पढ काली काली का पेपर रे ट्रम्प कोन कहले विल सेंड द यूएन ट्रिप टू द गाजा स्ट्रिप गाजा वेयर इज गाजा गाजा गजा नुह गाजा इज्राएल कोडी सेटा एई पाखरे अछि मेडिटेरियन सी पाखरे एठी इज्राएल दिस इज मेडिटेरेनियन सी हैला मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया मेडिटेरियन सी एठी तमर अछि गाजा स्ट्रिप गाजा रे वर्तमान फाल्ट लागि छै ना पैलेस्टाइन हो इज्राएल सब तो सेठी हमास आईएस अब लेबानन रो कोन ता ना लेबानन रे जो अच्छी तांगे संगरे जो झगड़ा लगी एबे हमास और इज्राएल पाले ये हेले हिजबुल्ला संगरे वर्तमान कहा संगरे झगड़ा ना होचे ना समस्त संगरे झगड़ा कर एंटा सो वर्तमान कालिका पथा कोच कालिकार जियोपॉलिटिक्स रे कोन थिला कि पाले ये ट्रम्प डिक्लेयर्ड टू सेंड द यूएन ट्रूप्स टू द गाजा सदर्न गाजा हला सदर्न गाजा को पठे सदर्न गाजा कोठी देखो वेस्ट एशिया मु खोलु खोलु हते बहिरे सब पेपर ओडा हाथ रे चिपक को जाय देखो दिस इज सदर्न गाजा दिस इज गाजा स्ट्रिप रे सीरिया गोलान हाइट्स दिस इज जॉर्डन एई पाखरे अछि ना तमर मेटेंसी पाखरे एटा हला इज्राएल गाजा रे हला वेस्ट एशिया मु खोलची गाजा रे बर्तन सदर्न से पठा होची हला वेस्ट एशिया मु खोलची पेज नंबर 80 और 81 82 जो भी तमर देखु छ गाजा खोला ये देखो गाजा स्ट्रिप ये देखो लेबनान इज्राएल लेबनान कैपिटल बेरेट है ये जगह बेरेट ठीक अच्छे पाउच लगी कि ना इज्राएल मेटेन से पाखे इज्राएल कैपिटल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इज्राएल जियोपॉलिटिक्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी मुझे समस्त शुण सिलेबस रे मु लिखिलिनी डरी जीव देखिकी geopolitics is also a part of geography हाँ मु क्वेश्चन पचार काली का पेपर कथा काली का ट्रम्प हैज सेंट ट्रूप्स टू द सदर्न गाजा इज कोटी मेडिटेरियन सी पाखरे इज्राएल मोर क्वेश्चन एना थिला इज्राएल कैपिटल कोन नेक्स्ट क्लास रे मोटे एग्जाम लेबे जेरूसलम बट यूएस इज नॉट माने एक्सेप्टिंग जेरूसलम एज द कैपिटल यूएस आउ गोटे कहा करछ मु आज पचार खाली जहाँ न कही पारे ठीक अच्छे से अनुसार तुम को क्लास रे माने ट्रीट करिया खबो मेडिसिन हाई डोज एंटीबायोटिक्स मिडिल डोज एंटीबायोटिक्स बेसी न कले कहा कांध पर जाई बस पड़िबो न हसटा तो पूरा लक्ष टकर वेरी गुड लेख इज्राएल यूएस कौन नौची कैपिटल कौन धरची तेल अवीव देखो सेठी गोटे देखो देखो एटलास को लेके तेल अवीव अच्छी कि नहीं व्हाई यूएस इज एक्सेप्टिंग तेल अवीव एज द कैपिटल ऑफ इज्राएल जियोपॉलिटिक्स ता अच्छी सिलेबस रे ना उठे दवा It is the main economic center. Main economic center. What type of economic center does it perpetuate there? तेल अवीव रे एथि पई तेल अवीव इज द बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहला आंसर देला ऑन रख इज्राएल माने की इहुदीज यूएस रो इहुदीज मानकर ब्रेन हैला सब माने मैक्सिमम तांकर जो पैटेंट तांकर बिजनेस टा ई माने रखुछन एक्चुअली जदि मु कहबी कि Tel Aviv, Israel is the 51st state of US. There is nothing wrong to say this one. Total number of states in US is 50. जदि इज्राएल को 51st को किसी असुविधा नहीं
आज इज्राएल एडी छोटिया कंट्री पूरा खंड सुदर्शन चक्र धरिक समस्त काटुची कौन पे? इट इज बिकॉज ऑफ द यूएस इज हेल्पिंग। बुझे नहीं? अच्छा कम बैक। तेल अबीब रे कहा जाए इट इज द डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑन रख, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायमंड एंड अदर वेरियस लग्जरी ऑर्नामेंट्स सब जिनस सेठी मिले तेल अबीब है। पढ़ पेपर पढ़ जहाँ जहाँ क्लास रे जो जिनस करेन्ट जिनस सब से डिस्कस हो। इट इज नॉट अबाउट खाली ट्रेडिशनल पाठ पढ़ा गला आउ ना से गुड़ा किसी बुझ कि नहीं सब तुम क्वेश्चन भी देख सेमती पकौन से मिसेकी बुझी जहाँ जहाँ क्वेश्चन पचार पुणी बैक आरंभ से सारी मुझे करी। ठीक अच्छे बेसिक जिनस नब क्लास रे फर्स्ट क्लास एज ओरिएंटेशन तुम जान लेट अस नो इच अदर लेट मी स्टडी द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास एंड द the corrugated brains of किसी गोटे दिन भितर हो बस हो किसी असुविधा नहीं। यस तुम ये कौन इडली आउ तरकारी नहीं खाइच? थैंक यू सो मच मो पे आनछ मो पे आनछ मु खाइबिनी खाइके आस तुम खाओ मजे आम कथा आज खाली शुण शुण क्लास रो लास्ट 5 मिनिट बाहर भी टाइम देवी से पचार। प्रथमटा है जस्ट माने लिसन कर। मोर फर्स्ट क्वेश्चन क्लास रे कौन थिला कौन पचार थिले? हाँ हाँ यहाँ तो आंसर है गला तापर फर्स्ट आउ कौन पचार थिले? मलेशिया कैपिटल। ठीक अच्छे ओके मु आउ गोटे जिनस पचार थी तुमको कि कंट्रीज कैपिटल। हाँ 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 नेक्स्ट क्लास रे को 80 पॉइंट सेटा तो तुमको देली असाइनमेंट करिवो हैला। नेक्स्ट क्लास रे मन रख तमे होम असाइनमेंट देली कौन करिवो कंटिनेंट्स कंटिनेंट वाइज चूज कर दीटा कंट्री प्रथम कर कंटिनेंट वाइज चूज कर जेकोस दीटा कंटिनेंट उठा और समस्त खाता मु देखिबी कंटिनेंट वाइज कौन करिवो देयर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। जमती फॉर एग्जांपल मु कहली नॉर्थ अमेरिका दिस तो वेरी बेसिक्स इन ज्योग्राफी। सपोज मुनेली सपोज नेले तुम यूरोप आउ अंटार्कटिका नबनी सार मुझा कंटिनेंट चूज कली जी प्रथम अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया नहीं थी खाता को मुझे पेज फाड़ी नहीं जी अंटार्कटिका किए अच्छा खाली पेंगुइन है दीटा कंट्री एंड देयर कैपिटल्स रिलेटेड नॉर्मल जिनस ज्योग्राफी पढ़ुच माने बेसिक सिविल सर्विस पढ़ुच माने यू शुड नो द कैपिटल्स। देखो तुम निजे भाव तुम आजिका डेट रे निज को सब गज कर निजर सेल्फ अपिजमेंट रु दूर को जाओ निज को खुशी कराओनी हम कहल 2 वर्ष 3 वर्ष पलि आज तुम निजे भाव मु इज्राएल कैपिटल पचारि मु बोलिविया कैपिटल पचारि मु मलेशिया कैपिटल पचारि जे कि हमर पड़ोसी तुम तारा कैपिटल जानी ना बुझीपार निजर उठाओ स्टैंडर्ड उठाओ सेल्फ अपीजमेंट बंद कर हम्बल हुआ पढ़ एगुड़ा जहाँ दूसरी से अनुसार करके आस। ठीक अच्छे निज भितर दीपटा को जलाओ ज्ञानर दीपटा। सेकेंड क्वेश्चन मुझे पचारि है आप नेक्स्ट क्लास होम असाइनमेंट एंड परदिन आसिया पूर्व मत देखा दर सार आम कर this is what the advantage of your offline classes that you will have in direct interactions of this one है पढ़ा आउ ताकू स्मार्ट वे रे पढ़िया भीतर बहुत फर्क पेपर पढ़ आई डो नॉट नो धीरे धीरे मुझे कहबी है सेमती न बर्तमान आम जीवा फर्स्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एटा पढ़िबा काहे कि मोटा कहूँ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वेरी बेसिक्स नोट्स डाकिला बेले नोट्स पूरा लिखिबो नोट्स काहे कि मु कहूँ जो माने ऑनलाइन रे भी अच्छो आई विल सजेस्ट लेख पीडीएफ्स मु जतले दरकार हबो जो जो जगह रे मु देबी लेखिले मेमोराइज बेसी हुए माइंड रे
द मोर यू राइट कहीं फिजिकली तुम ट्रांसमिट करुच एनर्जी टाक निज ब्रेन प्रथम पढ़ुली दुईटा कंट्री जदि जड़े कह कि ना सब कंटिनेंट वाइज कंट्री लिखिथु ठीक अच्छे बट मुझे जो प्रथम दुईटा कंटिनेंट देली यू कैन चूज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यू कैन चूज एशिया और यूरोप यू कैन चूज अफ्रिका एंड एशिया आ जी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया चूज कर खाता मुझे नहीं जी चिड़ी नहीं कि बाहर ठोला वाला जो बिक्री कर देदेव आउ कि पढ़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड माने मैं दुईटा बनाऊँ कि मत कह मंडा पिठा बनाऊँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाऊँ यस आउ कि पचार ये ए बी है आ भीतर लैटिट्यूड कोटा लॉन्गिट्यूड कोटा ओडिया रे कह जाए कोटा लैटिट्यूड अक्षांश और द्रव्यमान हाँ आ भीतर कोटा ए बी भीतर व्हिच वन इज लैटिट्यूड व्हिच वन इज लॉन्गिट्यूड कथे मिसई कि हो कि ना कह दियो जा बुझिया କଥା बुझिबे सर नहीं दिस वन लैटिट्यूड अच्छा लॉन्गिट्यूड मु जानी मोर मन नहीं रे मेरे बालयात्रा बोली मो ब्रेन पड़े बुझी नेक्स्ट देन कैंसल दिस इज लैटिट्यूड है दिस इज लैटिट्यूड इफ आई से दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड दिस इज अक्षांश एटा द्रव्यमान नहीं कि ओडिया जोटा कहते नाउ कम टू दिस वन मु प्रथम लैटिट्यूड को नौ आ लॉन्गिट्यूड एटा ठीक अच्छी पूरा एटा ठीक ना एटा ठीक मु लॉन्गिट्यूड को नहीं एटा ठीक ना व्हिच वन इज करेक्ट माने लॉन्गिट्यूड जदि मु कहबी ए करेक्ट ना ए वन करेक्ट लॉन्गिट्यूड रे ए करेक्ट ना ए वन करेक्ट ए वन करेक्ट व्हाई अर्थ इज बल्ज अच्छा ओके ठीक है गुड व्हाट्स योर गुड नेम मोर गोटे अच्छी आउ गोटे जिन मुझे कही दूसरी बाय फेस मो ना मन रखे मोर आज से जो भी जो स्टूडेंट मुझे करे एंड आई हैव गॉट एन वेरी कर्स मेमोरी जहाँ कही फटकिना मन रखी सो डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी मुझे कही से जिनसा मुझे करनी से दर मुझे खाली आदाय करवा जानी मैं टिकट कलेक्टर कंडक्टर आई एम ए कंडक्टर दिस वन अच्छा मत को ये जो लाइन्स गुड़ा इज आर द रियल लाइन्स ये हमको बाहर देखा हुए मुझे जी जयदेव बिहार छक आचार्य बिहार छक ये सब देखा मत ना मुंड बाजो मोर अरे तार गुड़ा झुलचे गोटा लैटिट्यूड बा नो नो एब्सोल्युटली नॉट दीज आर ऑल द इमेजिनरी लाइन्स मन रख दीज आर ऑल द इमेजिनरी लाइन्स बुझे ठीक अच्छे अच्छा तुम भी खाता अच्छी मोर अच्छी हिंट करने सब आटलास कल सांगे आउ रख तमर मु एति गारंटेड तम मोर नोट्स टू तम नोट्स टा बेसी हम सुंदर मोटा नहीं खूब पुराना खाली गोटे गारा होइतिबो मैंडरिन अक्षर रे हिंट पे तमर बेसी है अच्छा वर्तमान मु लिखुची हेडिंग दियो लैटिट्यूड्स लेख लैटिट्यूड्स आर द डाकुची लेख है लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स लैटिट्यूड्स आर द imaginary lines they are the imaginary lines that run completely latitudes are the imaginary lines that run completely around the globe as full circle around the globe as full circle
these are the latitudes. Imagine, please underline karo, imaginary lines hala that run the globe, that imaginary lines under that run completely around the globe as full circles. Eta banayla. Next statement, latitudes लिखी चल भला सब नोट्स चेक करी जेमती कोन लिखुछ हैला विथ हैंड राइटिंग जहार हैंड राइटिंग बिले आंपुडला बडा हेइतो मु भी आंपुडी पकेबी तक हैला तापर लिख latitudes are the angular distance, latitudes are the angular distance, they are the angular distance of a point on the earth's surface, of a point on the earth's surface, angular distance of a point on the earth's surface, comma, measured in degrees, measured in degrees, measured in degrees from the center of the earth, from the center of the earth. अपन लिखो next third statement, following are the input and latitudes. डायग्राम बनाओ. (23.5 degree north, half degree south). This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. This is 66.5 north. That is your Arctic Circle. This is your North Pole. This is your South Pole. This is encircle. Latitudes are encircle the total globe. These are imaginary lines. सीटा ना डाकी ची डेफिनेशन तमे उठी गलो देखि दो दीटा लाइन सीटे हला लिखि दियो latitude of the imaginary lines that encircle the full globes, that encircle the globe. किंतु longitude नो, longitude टा सब हाफ. लिखिला एटा तापर मु डाकिबी अन भलो नोट बनो जहार भलो नोट हो मु ताकू नेबी सब बैच रे करे जहार नोट हो कारण बहुत सारा एंड थाए मोर सेटा हला 5 वर्ष तर खाली इंडिकेशंस गुडा मेन जिंसटा तमर रहबो हला मु किछ रे क्लास रे जो गुडा करबी सेटा असाइनमेंट सांग करबी ऑन द स्पॉट हला एटा देखिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल दीज आर द थिंग्स नॉर्थ पोल साउथ पोल करेक्ट मोर नेक्स्ट क्वेश्चन करी सर मु कहबी देखि खाता पेपर चेक करे गोलटा भल ही करनु
चेप्टा चेप्टा मंडा पिठा भाया होती तोर कौन ना बाबू तोर दत्तकृष्ण भी फ्री किसी नहीं बढ़िया गोटे जो वेस्ट बेंगल आलू भाया होती तोर अंडाटा बनी तो देखी तो हैंड राइटिंग भल अच्छे रे तो जमी मैंने मुंडटा को थापी दे जोर रे जो क्रिस पिक्चर न था मुंड भाया देखा झील मान नोट्स गुड़ा बढ़िया बढ़िया वेरी गुड गर्ल्स मैन वेरी नाइस बॉयज मैंने रांपी देल खाली होगला खाली तो रंपा रंपी वेरी हाँ कर कर किसी नहीं तुम्हें खाई दो ना ये खाओ बरा पकड़ी पियाजी सब नहीं आई वेरी गुड बाहर खाई के आसता ना क्लास रे समस्त को बासनाटा दबा कौन ठीक फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है मत करी देखेबो ना ऑन द स्पॉट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर through which equator passes arrange them from west to east पचार क्वेश्चन पचार प्रिलिम्स रे भाया हाँ कि ना क्वेश्चन रिपीट कर हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर थ्रू विच इक्वेटर लाइन पासेस अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम रु पूर्व को अरेंज कर और ईस्ट टू वेस्ट बाबर मु दुईटा चॉइस दूची जाको भल लागला नहीं सर मु पश्चिम आरंभ करेबेनी मु प्रथम पूर्व आरंभ करी वास्तु दोष अछि मोर माने यू कैन गो फॉर ईस्ट टू वेस्ट बहुत जन अच्छा एमती निश्वास ने अरे हे निश्वासटा जानली है मोर गोटे सांग अच्छे निश्वास अरे एपटे निश्वास सेपटे नहीं वास्तुर मोटे कम करी मुझे तो घंटिकाटा बंद कर दे है कर दांत पचर देख कर 2 मिनिट्स टाइम देली ओपन बुक कॉपी करी देखे के माने आटलास खोलिकी देख ओपन हाँ कर कर फटाफट 2 मिनिट्स टाइम देली पश्चिम रु पूर्व को कि पूर्व रु पश्चिम को ऑथेंटिक देखिए कि ठीक करि पड़छ बहुत जनकर आज मैं देखुची आटलास रु अठा छाड़ीनी हाथ प्रथम खोला आउच वर्ल्ड पॉलिटिकल ए नो ठीक अछि जी फास्ट सारी हाथ टेकियो रेज योर हैंड हाथ टेकियो माने एमती नुह बेंच उपर ठिया हो हाथ टेकियो है तुमको पेपर दरकार यस यस कंट्रीज ना नेम कंट्रीज नेम लिखो न्यूज पेपर ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम तुम शुण खाली बस है जार सरला मत कह ओपन बुक माने नुह जो सुखुआ हाट पूरा जमी रखा हो पूरा एकदम गाँव में पंचानन मेला हो गप चलती ना तो लेख तुम स्टूडेंट एटलास बोधे
सरला मो पेन टे बाणी भूल जाए पेन रेड पेन अच्छी रे का बारे नहीं कैप रख दिया तो नहीं कैप नहीं तुम नाटक भूल सीता ये एटलास टा अवश्य पड़े ठीक नहीं ये क्लारिटी बेसी अच्छी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तापरे नहीं ठीक है सुन मैं एक थर डाकी दूची तो करूछ कर कर तुम भल कि देख मिसे खाली गोटे हबनी सीताकांत कोलंबिया ब्राजील गैबन युगांडा केनिया सोमालिया इंडोनेशिया ओके तो टोटल नंबर ऑफ कंट्री केते हला टोटल नंबर ऑफ कंट्री 10 ना इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील गैबन को 10 एक्सरसाइज करछो भल लागुची बहुत ने वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हला होनी केते कष्ट भाव गोटे नॉर्मल जिंस देली एटी हमको कष्ट लागुच किछि नै एटा धीरे धीरे हाबी जो हैबिट आज प्रथम क्लास किछि डोंट वरी धीरे धीरे हैबिट हे जो बहुत भल लागुच समस्त ऊपर एक्सरसाइज रे माडी जाइछ आज जेमती लागुच आटलास भितरे जेमती गाई ता कुंड भितरे मुंड पुरे खाए सेमती आटलास भितरे मुंड पुरे दे समस्त नै कि वर्तमान देख इट इज 13 कंट्रीज प्रथम सुनी निया हला बुझुच एक्सरसाइज भल लागुच करिवारे परीक्षा रे एमती आछे दिस क्वेश्चन हैज सेग्रीगेटेड इन टू पार्ट्स नंबर ऑफ कंट्रीज एंड टोटल वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट टोटल नंबर कंट्रीज हला कुआ जाय कि 13 कंट्रीज देखो मु केमती कहूच प्रथम हला इक्वेडर नेली प्रथम इक्वेडर इक्वेडर पर किए जाइछि कोलंबिया कोलंबिया पर ब्राजील ब्राजील पर तमे देखो अफ्रीका अफ्रीका कंटिनेंट पसिला अफ्रीका पसिला कि नहीं यस और नो वर्तमान हाथटा को सेमती फोल्ड करिकी केमती करिवो यू मेक योर हैंड फोल्ड हियर एंड जस्ट वेंट टू द अफ्रीका 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 एम देखो एमती एमती टाइप रो रखिवो फोल्ड कलो रखिलो एटी तमे सीताकांत एई बेटर एटा नबो इंडिया एबे ना आ किछ दिन जाओ नबो एटा हला एटा रहयो प्रथमे कोन देखो इक्वेटर साओ टर्म प्रिंसिपल्स बोली गोटे अच्छी कंट्री देखु जो एटी साओ टर्म अच्छी एटी दैट्स ए कंट्री साओ टर्म अफ्रीका पेज नंबर 80 86 87 देखो 86 87 अफ्रीका अच्छी नुआ खोला हो नहीं जान वेरी गुड कल किछ नै चलियो ठीक है देखु जो एटी साओ टर्म प्रिंसिपल पाउछ कि नहीं साओ टर्म हे ग्याबन रो पोर्ट को बुझ कि नहीं लेख साओ टर्म आल्सो तमे हेना सीताकांत छाड़ीछ समस्त छाड़ीछ साओ टर्म ग्याबन पूर्वरु साओ टर्म लिखिनियो ग्याबन पूर्वर किए गला को तीनटा मिस हेच मु कहूची गला नेक्स्ट गला किए साओ टर्म पर ग्याबन ग्याबन पर हला कांगो कांगो पर हला डीआरसी देन युगांडा डीआरसी माने किए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देन युगांडा देन केनिया बर्तमान अफ्रीका सरला अफ्रीका पर पुणी पॉलिटिकल मैप को आस आई एम सॉरी हाँ युगांडा केनिया देन सोमालिया गला युगांडा केनिया एंड सोमालिया गला पाउछ कि नहीं
नेक्स्ट तुम आस गोटे छाड़ी देच किए मालदीव्स मालदीव्स देख ये भल भाव इक्वेटर देकी जाइए मालदीव्स छाड़ दीटा छाड़ बारटा बारटा है इना साउ टोम छाड़ आउ मालदीव्स छाड़ मालदीव्स कैपिटल माले ठीक अच्छे आमर बॉलीवुड रो सब माने रिक्रिएशन जमी आमर ये रिक्रिएशन पॉइंट कौटी आम जाऊ टे चल जा पटिया छक बुली कि आम कटक रे चलु टे जो जीवा स्टाडियम बुली तांकर कौन कह बॉलीवुड रिक्रिएशन चलो जीवा आम टे मालदीव्स बुली है एमती मन रहा अच्छा गला मालदीव्स पर किए गला इंडोनेशिया जार कैपिटल जाकर्ता नुह मुझे कौन पाई नुह देखिल सीताकांत पाउच जा इंडोनेशिया लिखे इंडोनेशिया पर गोटे कंट्री सर 13टा कहला गोटे कंट्री क्या मिललानी इंडोनेशिया पर गोटे देखुच गोटे कंट्री नाउरू अच्छी नाउरू दैट इज हैला 13 नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर वेयर द इक्वेटर पासेस एई भलिया क्वेश्चन पचार प्रिलिम्स रो क्वेश्चन देखिया को भारी बढ़िया लगे हम भारी इजी हो हम हम कहीकि हेतु तापर आइला बेलू केते हेतु -0.66 अवार्ड मिलती अरे भूल कहली मु ठीक ना प्रैक्टिकल 13 कंट्रीज पाइल नाउरू ठीक अच्छे बुझी है समस्त मत लगे बहुत दिन पर आटलास भितर माने मुंड उठौन पूरा ता भितर जमी गाई पूरा कुंड भितर मुंड पूरी खाई जमी नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन को केमती दी प्रकार हम ए क्वेश्चन टाक मु कान लिखि परिबी हाउ मेनी कंट्रीज हैव पास्ड हाउ मेनी कंट्रीज हैव पास्ड हाउ मेनी कंट्रीज जगह रे मु लिखि परिबी हाउ मेनी कंटिनेंट्स हैव पास्ड थ्रू व्हिच इक्वेटर पासेस सेम टाइप रो क्वेश्चन लिख हाउ मेनी ए कंट्रीज जगह रे खाली कंटिनेंट मु लिखि परिबी हाउ मेनी कंटिनेंट्स are there through which equator passes arrange them from west to east this could be a question lekho probable आ तुम एथरा देखो रीजनल ले 7टा क्वेश्चन रीजनल पढ़ो डे बाय डे समर बढ़े बढ़े चलछन कारण से जानि छन पिला माने इथरे वीक दे प्रैक्टिकली पढ़ो सब जिंस रे कोन लिखलो हाउ मेनी कंटिनेंट्स थ्रू व्हिच द इक्वेटर पासेस कोन हो सीताकांत कहबे 3 वेरी गुड कौन कौन पश्चिम पूर्व को पूर्व कोटा बाछु पूर्व ना पश्चिम को पश्चिम पूर्व को यस वेस्ट टू ईस्ट यू आर गोइंग हां किए को अमेरिका साउथ अमेरिका देन तो किए हला साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड एशिया सपोज क्वेश्चन पचला परीक्षा रे कि तमे ईस्ट टू वेस्ट आसो देन इट इज योर एशिया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बुझलो कि नहीं है कि नहीं गैबन कांगो डीआरसी इट्स आउटम ये पास आउटम है एटा हला साउटम ठीक अछि सोमालिया गला तापरे आसला तोर एपटे मालदीव्स इक्वे तेन नाउरू आ बुझेला है भल लागुची एटा जो कले एटा कल आ गोटे क्वेश्चन एबे करेबी तापर देई देबी घरे करी कि मत देखेबो एबे लेख थर्ड फटाफट लेख एने जानी गलो वर्तमान एनर्जी लेख फटाफट क्विकली के देखुची लेख अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट through which Tropic of Cancer passes through. Arrange the following countries from west to east through which the Tropic of Cancer passes through. Hello? Tropic of Cancer. Tropic of Cancer passes through. देखी को कर 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 फटाफट एबे जानी गला वर्तमान आ बेसी हबनी टाइम हबनी कर माने टाइम कम नहीं तुम निजे भाव
जिते मेंटल एक्सरसाइज करियो द मोर यू डू द मोर यू फ्लोरिश. यार सरला मते कहयो इठी हेले पवनटा बच दत्त ना दत्त कृष्ण ना उधर खाली कृष्ण डाकिला होनी मु मोक्ष पाई जीवी दत्त कृष्ण तो इटा ने स्टूडेंट ने ए स्कूल टा ने कहूँ इंडिया पढ़ला बेले सुविधा हम है. ठीक है कोच this is not a country, this is a state, it's in the 50th state of US. सरला रे देख मुझे कही दूच है तुम से अनुसार चेक की करना कही दूच एका संगे है समस्त बहुत एक्साइटमेंट है भल लगुच सब लिखुच कर कर Taiwan is not a country. Taiwan, Tibet, they are claiming to be the country, but still UN has not ratified that. China तो समस्त संगे झगड़ा का संगे तार भल कहे ताइवान संगे झगड़ा हांगकांग संगे झगड़ा तिब्बत संगे झगड़ा समस्त चाहूँ अलग नहीं यूएस जदि मानुची ताले यूएन को हटे दियो यूएस जाको से आओ unanimously world is accepted the UN not US सरला देख मु कही दूची फर्स्ट है देख मुझा कही दूची मु प्रथमे देख केमती धर तुम कंटिनेंट वाइज देख प्रथमे नॉर्थ अमेरिका आफ्रिका देन एशिया एगेन हाँ कि ना एगेन तीन टा इक्वेटर रे तीन टा कि साउथ अमेरिका आफ्रिका एशिया कॉमन बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रे तुम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जगह नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका किए आमती देखी केमती देख तुम सब मन रख ओवरऑल देखुच ठीक अच्छे सब आउ सिंगल कंटिनेंट भी देख मु खोलि नॉर्थ अमेरिका एज ए कंटिनेंट खोलि प्लस यहाँ भी खोलि सेमती फोल्ड कर नॉर्थ अमेरिका तुम किए देख मेक्सिको देखुच कि नहीं मेक्सिको पर बाहामास अच्छी बाहामास कौटी शुणिच आउ कौटी शुणिच अरे बाहामास चप्पल मिलेनी बाहामास चप्पल किए पिंधिक आस बाहामास चप्पल मन रख बाहामास है चप्पल जानच व्हाई द नेम हैज गिवन एज बाहामास सीताकांत कहीं बाहामास कुआई जान एगुड़ा सब बुझ कि नहीं अरे जान नहीं कहीं नाटा बाहामास कौन कहई किंतु मन रख क्यूबा हेनी
क्यूबा हबनी क्यूबार कैपिटल हवाना अच्छा ठीक अच्छे बाहामास देखिल देन अच्छा वेस्ट इंडीज माने कौन की भल क्रिकेट खेलना वेस्ट इंडीज प्लेयर माने कहते मुझे बढ़िया लगे अच्छा वेस्ट इंडीज कौन पे दिया नाटा व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज is it because of some past colonial effects that it has given as the name as West Indies, or is it because of some other geopolitical situation, or is it because of some geographical aspects? Find it next class मते आंसर दो बुझी पारछो ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम लिखुछो तुम क्लास 1 एग्जाम you have to be need to be enrich your answer and mindset हला हम नाई मोरु बाहर की आस करिमो जिमो सेटा कदर बुझीगला नाउ नॉर्थ अमेरिका हैज गॉन नाउ कम टू द अफ्रीका अफ्रीका से देखो अफ्रीका कल रे अफ्रीका देखिलो अफ्रीका रे की आसी फर्स्ट कंट्री तुम देखुछो की आसी वेस्टर्न सहारा देन मॉरिशियाना माली नाइजर नाइजर आसी सॉरी 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 नहीं आई एम सॉरी तुम माली माली पर अल्जेरिया अल्जेरिया पर लिबिया नाइजर हबनी पासेस थ्रू देयर आर मन रख दीटा जिनस सीताकांत क्वेश्चन दी प्रकार आसे मन रख एथरे भी वर्डिंग्स रे ध्यान दियो तुम सिविल सर्विस लिखुछो पासेस थ्रू एंड टचिंग द बॉर्डर नाइजर ऊपर देखो बॉर्डर टच करके जाइछि इट्स नॉट पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू माने कंट्री भीतर जाइछि हां कि ना तमे जो एटलास देखु न दिस प्रोजेक्शन आर कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शंस माने मर्काटर प्रोजेक्शन से माने कर हाइछ वर्तमान ये किस दिन तळे कथा कहूँ 15 दिन तळे वर्तमान किछि कंट्री ऐसा माने क्लेम करूचंती वेस्ट एशिया आई थिंक हाँ यूरोपियन कंट्रीज की यूएस कौन करछि तार निज एरिया को बड़ करके देखै दी से कहउछन दैट इज नीड टू बी चेंज इन मार्केटर प्रोजेक्शन ए जो तुम देखुछ ए जो स्केलिंग टा है एटा मोस्टली कार्टोग्राफी स्केलिंग टा मार्केटर प्रोजेक्शन खाली एतिक मन रख कार्टोग्राफी केमती कार्टोग्राफी मु कहि दोछि मु जदि कहउछि प्रथम 5 नंबर पेज रे एगडा सब देइछि भल भाबे पढिबो कार्टोग्राफी एगडा त केबे खोला नथो कार्टोग्राफी स्केल एगडा सब हे एठी दिया आइछि गोटे पचार एटा पुणी कौन एटा ही सेटा है 3 नंबर पेज है अच्छा बर्तमान आफ्रिका देख कौन मुझे कहली बुझीगला सीताकांत पास क्वेश्चन रो शब्द ऊपर ध्यान दियो बुझो कि नहीं इट्स नॉट एन क्लरिकल एग्जाम यू आर अपेयरिंग शब्द कौन है पासेस थ्रू आउ टचिंग द बॉर्डर दीटा अंतर फरक अच्छे हाँ कि ना कन्विंस यस और नो सुबुनी वेरी गुड कौन है अल्जेरिया लिबिया इजिप्ट गला अफ्रीका सरला ना कम टू द एशिया वर्ल्ड सेमती फोल्ड कर सेमती फोल्ड करके वेस्ट एशिया को आस बर्तमान एशिया एशिया को आसली एशिया पेज नंबर 72 और 71 आई सपोज एशिया रे कौन आसी साउदी अरेबिया प्रथम आसला कि साउदी अरेबिया देन अच्छा एशिया रे पुणी देखला बेले भी तुमको क्लियर देखा होनी पछ पेज रे टिके पळेबो वेस्ट एशिया पूरा अछि वेस्ट एशिया रे पूरा क्लियरली देखौछ अछि कि नहीं माने एते प्रैक्टिस हेई नथिबो जंती आज गोटे दिन तुम खेलेलणी मते लागुची कहार आंगुठी जंती लोटी पड़लानी कि एंती करछि नै कि नेक्स्ट देखुछ साउदी अरेबिया देखुछ अच्छी साउदी अरेबिया अच्छा साउदी अरेबिया रे जो जानती कोठी पूजा करिया पे मक्का अच्छी ना मक्का मदीना सी गला बेले टिके पछकु टिके तुम जमती भाव कि सार आमको नौछ आम फ्लाइट रे उड़ी जाऊँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए तलू को देखुछ कि नहीं मक्का मदीना देखुछ कि नहीं जानती कि नहीं हज करिया मक्का मदीना सपोज गोटे क्वेश्चन पचारा व्हिच वन कोथरे तुम अच्छी मक्का मदीना रे व्हिच वन इज नियर टू द कोस्ट ऑफ योर रेड सी किए मक्का ना मदीना मक्का है मक्का नेक्स्ट अच्छा साउदी अरेबिया गला साउदी अरेबिया तुम किए देखुछ क्वातर क्वातर देखुछ ए सॉरी सॉरी यूएई आई एम सॉरी यूएई पर देन ओमान ओमान कैपिटल मस्कट
ठीक अच्छे बर्तमान जो लास्ट ईयर गोटे इश्यू होता लास्ट ईयर कहे लास्ट मंथ रे केरला केरली मन रख मलाइलीज आर मलाइली माने को माने केरला दे आर मोस्टली माइग्रेट टू द वेस्ट एशिया एंड खास करके ओमान है ओमान बाहरीन ये सब जाती कौन पाई आज ए नर्स इंडिया जदि सब भल नर्स पाइब मलाइलीज केरलीज माने बहुत भल से नर्स ठीक अच्छे मुझे कहीं कौच गप से हिसाब से तुम मन रस एपट भी जिनस कि इंडिया रे जमी कह जाए मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टेट भितर जदि आम देख जमी देखा जाए कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना मैक्सिमम यूथ्स दे प्रिफर टू माइग्रेट टू द अदर कंट्री फॉर जॉब पे कंट्री से यूएस रे रहा भारी पसंद करते है आउ द यूथ दो जो वांट टू स्टे इन देयर ओन कंट्री आउ झगड़ा लगी जीवन छाड़ी जाए से वेस्ट बेंगल चलबेना आउ ओडिशा बुझे कि नहीं ममता दीदी पूरा सीधे पूरा माहिर पूरा नहीं झगड़ा करिया बुझे कि नहीं कौन कहते चलबेना आउ गोटे आमर ओडिशा कुआड़े पसंद नहीं आउ ये भी ठीक अच्छे एम छाड़ी कुआड़े जानते नहीं ये रे आमर जमी पखाड़ खाइबे शोबे आम खरा बेले जमी देखते मैंने पखाड़ खाई पूरा लाइट फाइट बंद हो शोयापी है शीत दिन आसरी 2 घंटा पूरा खरा जमी खरा बेले सका हो पुणी बरा तरकारी आसो दिस इज व्हाट वी आर आउ खाली हम नाई मो कही इयर पास हो चलो देख लो ये नेक्स्ट कौन आस हाँ ओमान आसला नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पशिला किए इंडिया इंडिया रे पशिला इंडिया पशिला परे बांग्लादेश देन म्यांमार बांग्लादेश म्यांमार देन चाइना भूल रे भी वियतनाम को मारिबोनी वियतनाम को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पशुनी गोटे कोथरे क्वेश्चन मु देखिथिली हैला वियतनाम को क्वेश्चंस वियतनाम रे पशुनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस वियतनाम रे तमरो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पशुनी वियतनाम रो कैपिटल सरला चक्का पंक्चर ठीक है कि नहीं हानोई वियतनाम रो हाथ कि कुछ हाथ इट्स हानोई इट्स नॉट हाथ है होचिमिन सिटी गोटे अच्छी देखो वियतनाम रे शुणिच किए से होचिमिन किए सीताकांत होचिमिन किए एटी अच्छी ना होचिमिन सिटी इफ आई से ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होचिमिन इज वाज द मेन ही वाज द ग्रेट पर्सनालिटी आगुरी थिला एबे चेंज हेची हानोई होचिमिन अच्छी कि नहीं से गोटे बड़ रिवर तुम देखुच गोटे होची मेकंग रिवर खाली खाली मन पकड़ साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेला बेले मुझे आज बहुत नुआ नुआ लगुव एत गुड़ाए नुआ ना सार कौन कहते होचिमिन किए किए मत कह सार होचिमिन किए से एंड प्लीज डोंट टेल मी कि मोर पीसा नुह कि मौसा नुह होचिमिन वाज द फ्रीडम फाइटर जमती आमर गांधी जी सेमती होचिमिन थिले से होचिमिन जमती क्यूबा रे कह जाए क्या क्यूबा रे किए मेन यूएस रो सब झगड़ा ना क्यों लेफ्टिस्ट में फिडेल कास्ट्रो जियो पॉलिटिक्स रे बहुत वीक समझते बहुत पढ़िया पड़ो बुझुच बुझुच कि नहीं लेवलटा निजको एनरिच कर सब निज भितर पावर अच्छी ट्राई टू एनर्जाइज दिस वन केते जण मेडिटेशन करछ सकाळू माने निजर दिन रे जण को व्हाट इज दैट मेडिटेशन स्लीपिंग इज नॉट काउंटेड एज एन मेडिटेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर किए कह कि सर मुझे शवासन करुच्ची मु मेडिटेशन करे तापरे सकाळू उठे माने समाधि रे पळाए पूरा ओके एनीवेज ठीक है पायलट एक्सरसाइज टा नेक्स्ट से भलिया भाव रे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल लास्ट नेक्स्ट क्लास में मते करिके देखियो हां कि ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास में कौन देली जेमती तुम इना कल से भाव में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कल इक्वेटर को भी दी भाग कली कंटिनेंट्स ये नहीं कि सेमती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हो पार सेमती ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल कंट्रीज कंटिनेंट क्लियर ता माने आज डिस्कशन रो पाखापाखी 8 रु 10टा क्वेश्चन तुम पाइल एग्जाम ओरिएंटेड पाठ पढ़ जना पड़ोनी तुम टाइम पड़ेब केमती सब जहाँ भी पढ़ुच बी ऑलवेज प्रोडक्टिव कि मुझे केतरा सॉल्व करि परिबी केतरा करि परिबी इंटरव्यू रे केमती कहि परिबी केमती लिखि परिबी ए भलिया भाव में
एंड ऑलवेज इट इज सब बेले तुम निजे कह आज मोर संगे तुम देखिए आज इंटरनेशनल इश्यूज भी हम डिस्कशन कर को जगह कौन है कौन नहीं अदर इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है बर्तमान गोटे लास्ट क्वेश्चन मुझे दूसरी टॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर लेख 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 क्लास रे असाइनमेंट बहुत जरूरी अदरवाइज देयर इज नो इंपैक्ट लेख अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ए यार ए तो ना जुबली ने कौन बुझ साधना हाँ नहीं थैंक यू साधना हाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट arrange the following states of India from west to east, comma, through which Tropic of Cancer passes through. Wait, लिखी दूची इंडिया ऊपर जहाँ आज पढ़ी लो. Arrange the following sorry. Following states through which following states from west to east through which Tropic of Cancer passes through India रे pass through following states of India है ना west to east states of India states in India जहाँ है ना arrange the following अरे लिभी बटा मुझे जानी पड़नी केमती मैंने धरले नहीं मोर घर सेपटे अच्छी सेटा एमती धरले एडी एमती कहीं हाँ arrange the following states in India through which from west to east through which the Tropic of Cancer passes through हाँ आंसर दिया ले गया हाँ फटाफट इंडिया गोटे इंडिया पचारि सीताकांत भोक लगे बोधे ना सम्मान इज वेटिंग लेख न देखी लेख आठटा तो ठीक अच्छे लेख न देखी लेख लेख स्टेट देखी देखी लेख नुआ स्टेट क्रिएट कर दियो नि इट शुड नॉट बी दैट यू क्रिएटेड ए न्यू स्टेट पछ बेंच रे बहुत आवाज शुभुची जेमती लागुची गोटे सुखुआ हाट यूनिट 8 रे नंबर 8 रे माछ बिक्री होउची देख देखि की खुशी तो माने बरा और इडली आनी पूरा क्लास तक पूरा महकी देलनी पूरा ना वेरी नाइस ओ ना कोन रे जुबली कुछ ये जो सॉरी साधना दे पे गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ hey Gujarat Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh Jharkhand you should write like this Gujarat then Rajasthan this is chronology empty mind re besi rahi mon ro then MP then Chhattisgarh then Jharkhand West Bengal ठीक अछि मिजोरम एमती लेख देख इतने गुड़ाए ऑर्नामेंट्स तापर दिस इज लाइक राइट सब एमती मु कहि दउ छला गुजरात एमती देन राजस्थान देन एमपी देन छत्तीसगढ़ ए भड़े अरेंज करियो देन झारखंड जम्मू कश्मीर सेटा जो झारखंड जे ला झारखंड देन वेस्ट बंगाल
देन त्रिपुरा देन मणिपुर सॉरी मिजोराम मिजो शुण मु कहीं कहूँ एमती भाव आंसर टा लिख तुम लिख लो दिस इज गुजरात है गुजरात पर राजस्थान राजस्थान पर मध्य प्रदेश देन छत्तीसगढ़ देन झारखंड 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 पर पुणी चलबे ना वेस्ट बंगाल अरे भूल कहली चलबे ना पा देन त्रिपुरा देन मिजोराम वाई सजेस्ट समस्त ऊपर तलू लिखुच तलू के नो एमती कहीं लिख बेसी मन रहे मेमोराइज हम परीक्षा सपोज तुम चॉइस देछि सपोज गोटे क्वेश्चन टा पचारछि आउ एबीसीडी ऑप्शन देछि देख केमती से माने करिवे तुम तलू को ऊपर लिखि देउछ रज दोली भलिया ऊपर को तळ लिखुछ किंतु सपोज क्वेश्चन करछि एतिकी देइनी मिस अछि तुमर एठू आरंभ होइछि सपोज चारिटा स्टेट से माने देइछन्ती झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोराम सपोज एई चारटा देइछन्ती तुम यदि सीरियली न मन रखिछ तुम ब्रेन से समय रिसीव करिवनी वेरी प्रैक्टिकल मु कहूँ वेरी प्रैक्टिकल यूपीएससी हो के जिनस हो तुमको यही जिनस गुड़ा ही तुम मान्य हो देयर आर सम यू नो सम रूल्स फॉर मैप मैपिंग तुम जहाँ पढ़ न पढ़ मैपिंग तुम देखियो तुम रीजनल पार्ट जियो पॉलिटिक्स एगुड़ा सब बहुत सारा स्ट्रांग हम खाली जस्ट फॉलो दैट वन ऊपर तल रज क्वीन भाया करनी रज दोली भाया ये लिखियो कहीं तुमको प्रैक्टिकल तुम सपोज ये चार्टर ये चार्टा देनी ये चार्टा देछि हठात मन पड़लानी बुझ कि नहीं सब एका भाया लगे सब तो ठीक अच्छे तुम जानिच तुम ये प्राय पिला भूल करती ये त्रिपुरा मिजोराम मिजोराम त्रिपुरा ये भूल भाल मारदेव प्रिलिम्स रे केबे भी मैटर करेनी हाउ मच यू नो प्रिलिम्स रे मैटर करे तुम केमती सॉल्व कला एक्यूरेसी प्रिलिम्स रे मैटर करे एक्यूरेसी बुझिपार वेरी प्रैक्टिकल कथा सब रूट लेवल तुम काम कर तुम देखो तुम नियटा मजबूत हम गॉट इट माय पॉइंट ये भी तुमको देखो ये चार्टा छाड़ दियो झारखंड वेस्ट बंगाल सपोज एमती परीक्षा देछि झारखंड ये भाया आजकल तो दौर ये ना तिरचिना क्वेश्चन दौर कि नहीं झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोराम है तले पुणी देथिबो पुणी वेस्ट बंगाल झारखंड एपटे पुणी मिजोराम त्रिपुरा ये करके एबीसीडी करके एमती देथिबो मोस्ट ऑफ द टाइम रे भूल टाको मार देबो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजी प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट यू नो मेकिंग अ नेट से माने चाहंती कि भूल करू आज का डेट रे तुम देखो आगुरु जेमती क्वेश्चन आसुतला 2022 पूर्व यूपीएससी रो जो सिलेबस पूर्व से माने प्राय क्वेश्चंस को मु देखो हमर काम होला आज मेंटर वी हैव टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन सेटर्स से माने आगुरु कोन करथले क्वेश्चन से माने कोन करथले आगुरु दीटा चॉइस को एलिमिनेट करके तुम ए बी मारथलो अरे सीजीएल टाइप रो क्लरिकल आजकल सीजीएल भी सेमती आसुनी कंपटीशन वर्तमान से माने कोन करचोंदी प्राय तो से माने 95% एटा करेक्ट 97 गोटे 99.9 आ गोटे तुमको 100 इन यूपीएससी आसे कोन 99.91 92 93 94 आ गोटे 100 थिबो 100 टक करियो एमलो आछी तो तमरो डिफिकल्टी लेवल एते नहीं नथिंग टू बी पैनिक कहीं जड़े सेम परिश्रम करके जड़े डायरेक्ट डीएम हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जड़े तहसीलदार हो भर बहुत फरक सेमती आरटीआई एक्ट करके परीक्षा बंद करदे माने मुझे डिफिकल्टी लेवल तुम एत आसबनी बट मेक श्योर दैट द क्वेश्चन हैज गॉट एन सीवियर मेटामॉर्फोसिस माने लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बर्तमान आग भाया ए भी ना तुमको चूज करिया हम माने क्लोजनेस 100% चूज करिया आउ 100% तुम मु काली नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आनीबी कि तुम नहीं आसो देख से क्वेश्चन आसुची पिला इंटरव्यू देकी होनी प्रीलिम्स 5टा मोर स्टूडेंट अच्छा एथर से बुझे कि सो इट इज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी मन रख दीटा जिनस प्रीलिम्स रे काम करे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी केबे भी मैटर करे बहुत पिला कम पढ़ी थे मतलब किसी जन स्टूडेंट सर आम ना सर 52-53टा क्वेश्चन कर बसथे मोर पेसेंस नहीं अच्छा सब उत्कल यूनिवर्सिटी बड़ंगा टोका सब भल पढ़ाते भल फ्रेंडली बहुत बोले कौन है कह मैंने मुझे गोटे कैलकुलेशन एतिक है तापर मुझे आसुच्छी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक एक्टिविटी ता पूर्व तुमको प्रीलिम्स रो स्ट्रेटजी में डिस्कस करी मुंडरे सेटा पूरा
कि आम एग्जाम क्लीयर करूँ रिजल्ट ओरिएंटेड हुए सब है केमती से मत कहला कि सर मुझे 53टा क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट केते अटेम्प्टेड क्वेश्चन केते अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 53 देखो तार एक्यूरेसी सी भाई बोलते मुझे सब क्लास कहे 70टा कर इन जनरल 70 कर दरकार नहीं है 70 टू 10टा जमी से कहि से आगू आगू कहि से 53 है 53 ये थरका चुप रहे सर सार पार्टी करेंगे सार सब कहते सार को मोर 30% कम कर 53 रु मुझे केतटा ठीक कर सर आप कहते मुझे बजे भी धरिक जाऊँ कनमली कह मत केतटा कर सी कौन कर 53 रु ना 53 ना 54 कर ता भितर सी करेक्ट एतिकी है 51 ना 52 गोटे डिबेट थिला आ 3टा तार रॉन्ग थिला ता भितर गोटे नलिफाई भी हेगला जो काटी देला एथरका तो केते रहले 51 इंटू 2 केते हला 102 ये 3टार गोटे नलिफाई हला माने 0.66 इंटू 2 1.32 गोटे नलिफाई हेगला से रखी ताले केते 100.68 पाइले न पाइले अलग जिनस है पाई से मुझे तुमको तार एक्यूरेसी देख एक्यूरेसी बुझ तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी इट डजंट मीन दैट तमे गोटे पिला आमर ये बाहर पिला कौन परीक्षा हल बाहर मुझे शुणी केतरा मारलु केतरा मारलु ये भाया अबे पचानु केतरा भूल कलु दिस इज द काइंड ऑफ नोशन व्हाट इज गोइंग ऑन बुझिपार तो मुझे कहबार कौन एक्यूरेसी तार देखुच ना 95% एक्यूरेसी अच्छी तार 51टा करेक्ट कर 3टा रॉन्ग आगुरी 1/4 थिला वर्तमान 1/3 सो जरूरी नुह तुम कह सब ट्रिक्स केमती कर बहुत गुड़े क्वेश्चन आस जोग्राफी एनवायरनमेंट से भाया भाव में तुम अप्रोच नब बुझे केते सीरीयस सब हाँ एमती लगुच मैंने दहीबरा घुगुनी भाया गरम हो पूरा मुंडे छाड़देवी टाइम जना पड़नी टाइम लास्ट पढ़े देख मुझे छाड़देवी है बुझी हो प्रैक्टिकल है सब प्रैक्टिकली जिनसा भाव कि कौन तुम आज लर्न कल से जिनसा आज लास्ट क्वेश्चन को तुम करके नेक्स्ट मुझे कहबी है नेक्स्ट लेख क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड climatic classification of the world based on latitude it is based on bracket रे based on latitude (66 half degree south) I'm sorry this is south this is 66 half degree north pole south pole already करिचो इडी कलर चेंज हे परियो रे हां
this is your torrid zone. देखो torrid zone put till e porjanta. Then this is temperate zone. Same jinsa. Same. This is frigid zone. क्लास रे तुम आसिया पूर्व जो मैंने कहले कि सर आरंभ आम कर कारण मु पढ़ेबी से अनुसार तो से लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी मेन तुम एक्वेंटेड रहबो सो इट वुड बी इजीली कम्युनिकेबल टू बोथ ऑफ अस हैला दिस इज योर टॉरिड जोन देन टेम्परेट जोन का भीतर हला 23 डिग्री नॉर्थ रु 66 डिग्री हाफ पर्यंत भीतर आउ एटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु देन एटी आ गुड जिंस सॉरी एटी दिस इज योर Antarctic circle this is your Arctic circle. सेग्रीगेशन बुझ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपोर्टेंट कहीं आपको नहीं ही तुम सब जिन बेस हम क्लाइमेटोलॉजी केमती इवन जो जो जिन बेसिक्स है टिल क्लाइमेटोलॉजी पर्यटन तुम टे रहा प्रेसर देखिए फंडामेंटल तुम देखिए धीरे 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 सब जिन फॉल इन अपार्ट तो इजी रहा बर्तमान लिख द वर्ल्ड क्लाइमेटिक लिख अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन according to the climatic classification system comma the regions of the world can be classified according to the climatic classification system comma जो जो जगह कहबी सेठी दबो comma the regions of the world can be classified into three major climatic zone comma based on their location both in the northern and southern hemisphere northern and southern hemisphere comma are as follows लिखी कि मैंने एमती दब are as follows number 1 ये लिख टॉरिड जोन है सब हेडिंग टॉरिड जोन हेडिंग सब हेडिंग टॉरिड जोन टॉरिड जोन तुम कौन कह देखुच ये गरम जगह 0 डिग्री रू नहीं कि 23 हाफ आउ 23 नॉर्थ आउ साउथ आज जो एबे एक्सरसाइज कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिलो को वर्ल्ड ता माने को कंट्री रे बेस कॉन्टिनेंट रे बेसी मोस्टली अफ्रीका एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका किछि पार्ट ए जोनटा आसिला जोटा कि तुम निजे देखिलो कोठी
आटलास रे देखिलो एई जगह रे मु देखौची देख वर्तमान हैला ता माने तुम देखुचो वर्ल्ड रो एई पार्टटा गरम जगह एई पार्ट रे भी सबुटो अधिका पॉपुलेशन वर्ल्ड रो केते पॉपुलेशन है वर्ल्ड रे 820 crores अप्रोक्सीमेट एई कंट्री एई जो जगह रे तुम देखुचो अफ्रीका एशिया एई सबुटो एई जाउची सबुटो बेसी पॉपुलेशन गरम जगह काहे पढ़ला बेले सब डायमेंशनली भाव मु तुम कहली तुम आज इन एक्सरसाइज कल टी तुम देख यही जगह सबुठ बेसी पॉपुलेशन माइंड थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ मुझे कहली कि वर्ल्ड 800 कोटी 820 कोटी रु एतिकी जो टॉपिक एतिकी भितर है एतिकी भितर तुम मेजोरिटी पॉपुलेशन रोचंती कहीं मेजोरिटी माने 820 कोटी रु पाखापाखि यही जगह पाखापाखि 70% पॉपुलेशन अच्छा और लेट्स से 60 to 65%, 60 to 70 भितर कहीं बिकॉज ऑफ वार्मनेस शुणी पढ़ा संगे ह्यूमन जियोग्राफी क्वेश्चन आसु देखो तो जो भाया बॉडी रो टेम्परेचर हाई रुए जनरली टॉरिड जोन आम जो रोच सो इट इंड्यूसेस द फर्टिलिटी रेट माने रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाई दिए that is why most of the African countries their fertility rate is 5 to 6 for example Nigeria बुझो कि नहीं 5 plus can you imagine India रे वर्तमान fertility rate 2 1.9 है हम खुशी हो still we are the most populated country so happy ना so feel proud अरे we are so fertile यार बुझी होची जिनसटा बुझी पड़ला फर्टिलिटी रेट कहीं अधिका कहीं बॉडी रे वार्मनेस द कंट्रीज लाइक रशिया द कंट्रीज लाइक आइसलैंड से कहते कि तांकर यूरोप इज एजिंग पॉपुलेशन जन्म हो कहीं करना से पिला बर्तमान कंट्री कहते तुम पुटिन जो वार है कहला तुम माने कंट्री रो पॉपुलेशन बढ़ाओ ओनली एते बड़ कंट्री ओनली 9 crore पॉपुलेशन रशिया रे बुझ पारछ से तुलना में बहुत आगे बिहार रे कहले अरे तुम कंट्री प्रॉब्लम होची अरे आमको छाड़ दियो तुम वर्ष भीतर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर दो बुझीला एगुड़ा यही की खुशी गप एमती चलता गप एक बुझीगला कि हाउ वी आर रिलेटेड द फिजिकल ज्योग्राफी द ह्यूमन ज्योग्राफी इट इज द टेम्परेचर पैरामीटर दैट इंड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर दैट इज व्हाई द फर्टिलिटी रेट इज हाई दिस जोन वर्ल्ड रे 820 crores रु पाखापाखि 500 रु 600 कोटी लोक एरी भितर अछंती कन्विन्स्ड बुझी हो कि नहीं लेख कोठी आम थे टॉरिड जोन लेख दिस टॉरिड जोन इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन दिस टॉरिड जोन इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज योर ट्रॉपिकल जोन नेक्स्ट माने तीर चिन्ह देखिए टॉरिड जोन लिख लो ये जमी कहली लिख लो तुम टॉरिड जोन टॉरिड जोन को कहा जाए ट्रॉपिकल जोन भी एटी देला पुनी सेकंड इन तीर चिन्ह देखि तळे लिख दिस जोन इज मेनली लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन दिस जोन इज मेनली लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इन बोथ द हेमिस्फीयर ठीक है but their maximum extension is in between 30 degree north and 30 degree south माने एटा तो theoretically कहा जाए बट माने एक्सटेंशन कोठी 30 डिग्री नॉर्थ रु 30 डिग्री साउथ कार टॉरिड जोन रो हला maximum extension is in between 30 degree north to 30 degree south बुझीगला तापर लेख से आ गोटे तीर चिन्ह देखि लिटरली टॉरिड मीन्स हॉट प्लीज अंडरलाइन लिटरली टॉरिड मीन्स माने हॉट
नेक्स्ट टेम्परेट जोन है नेक्स्ट टेम्परेट जोन देखिए होची डायग्राम रे टेम्परेट जोन लिखि सारा फटाफट टेम्परेट जोन इज लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल टेम्परेट जोन इज लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल in northern hemisphere similarly full stop दियो similarly in southern hemisphere it is in between tropic of Capricorn and Antarctic circle लिखा है डायग्राम देखिए भी तुम जानी परिवो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु आर्कटिक सर्कल भितर टेम्परेट सदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रु अंटार्कटिक सर्कल भितर ठीक अछि माने कौन टेम्परेचर लिटरली टेम्परेट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट लिटरली टेम्परेट मीन्स mild temperature or we can say neither too hot or cold or neither too hot or cold mild temperature or we can say neither too hot or cold माने टेम्परेचर जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है प्लीजिंग टाइप ना अधिका बेसी ठंडा ना बेसी गरम माइल्ड प्लीजिंग टेम्परेचर लास्ट वन फ्रिजिड जोन देखो फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन ऑल्सो कॉल्ड फ्रिजिड FRI जी जेड जी जहाँ भी लिख हाँ मुझे जी लिख दीजिए मु जेनजी लिखी दीजिए है फ्रिजिड लक्षे टंका हस रे फ्रिजिड है फ्रिजिड जहाँ भी लिख जमती प्रोनाउंसिएशन है मुझे अमेरिकन इंग्लिश लिख दीजिए फ्रिजिड लिख लिटरली फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड लिटरली फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड नहीं सेटा मु हसतला भूल गेला हला एटा काटी दियो टिके माइंड डिस्टर्ब होला हला प्रथम जो लिखितिलो नहीं प्रथम आल्सो कोल्ड काटी दियो एटा लिखि दियो लिटरली फ्रिजिड मींस वेरी कोल्ड ता पूर्वडा जो लिखिछ सेटा लिखो फ्रिजिड जोन इज आल्सो कॉल्ड एज पोलर जोन लिटरली प्रथम लिखलो लिटरली फ्रिजिड मींस वेरी कोल्ड है फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड तार प्रथम जोटा देखी से लिख फ्रिजिड जोन इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज पोलर जोन है वेरी सिंपल तापर लिख इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर it is located in between in northern hemisphere it is located in between in northern hemisphere it is located in between देखो नीचे आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल ठीक अच्छे एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज इन बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल हाँ इन सदर्न हेमिस्फीयर it is located in between Antarctic Circle and South Pole ता माने मु जदि नेबी सदर्न हेमिस्फीयर रे तुम ये देखियो यदि सदर्न हेमिस्फीयर रे तुम ये देखुछ ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाइछि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ता जाइछि कि नहीं ए सॉरी आर्कटिक सर्कल ता तुम ये देखियो आर्कटिक सर्कल ता जाइछि कहा ऊपर ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया ऊपर एंटार्क्टिक सर्कल गला ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
आंटार्कटिक सर्कल जाइए देख आंटार्कटिका ऊपर तुम देखियो आंटार्कटिका कोठी अछि पेज नंबर ठीक 110 रे खोली देख दिस वन देखो सही आंटार्कटिका आंटार्कटिका ऊपर देखो आंटार्कटिक सर्कल जाइए दिस वन देखिल 105 मोर अच्छी तुम देख अच्छी मु आंटार्कटिक सर्कल कहली अच्छी अरे आंटार्कटिका खोल आंटार्कटिका बोली गोटे कंटिनेंट अच्छी जोटी पेंगुइन अच्छी पेंगुइन माने बर्तमान कहूँ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज पेंगुइन मे गो एक्सटिंक्ट बाय 2060 50 ता पूर्व झड़ज कहीं कहल चाइना सब पेंगुइन चोरी करके नहीं जाऊँ डाँ बाँ देखुची पहला पूरे ना सब तो खाईगला व्हेल खाइला सार्क खाइला पेंगुइन खाइला जहाँ पाइले खाईगले से देखो ना कोविड है कोविड कौट बाहर से भाइरस बाहर ना से कहूँ बैट रू से बाहर से जो साप को खाइले अहिरा साप को साप रू सब जिन बाहर एटा कौट भाइरस गुड़ा कौट अजगर खाए से गोटा मनीष खेलीदे मूसा मूसा को स्टिक सस बुड़े चोबे खाई दौन छोट ये को देखते सब है ठीक अच्छे ताले आज मुझे रखुची एनी क्वेश्चंस फॉर द भल लगे क्लास मत कह टिके मो हार्ट अटैक हो मत कह क्लास रे बुझी हो सब मन रख पढ़ा आउ क्वेश्चंस करिया भीतर बहुत फरक अच्छे सब प्रैक्टिकल ये कर देख टाइम जना पड़नी एंजॉय कर 2.5 घंटा पढ़ेला मुझे जानी पाइले बट गोटे जिन मन रख तुम जहाँ भी पढ़ुच सब भाव कि ओरिएंटेशन आज जान कि कौ भाव में पढ़ले मु प्रिलिम्स रे केमती सॉल्व करी मेंस रे केमती लिखी इंटरव्यू रे केमती कहि पारि दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव खाली कमिंग गोइंग आउ ईटिंग स्लीपिंग इट डजंट मीन ऑफ द लाइफ मीन्स आउ एंड भीतर अच्छी मीन्स है आमर कर्म एंड है आमर ऑब्जेक्टिव है सो टिल देन घरे जो असाइनमेंट देली ताको करिके आनो कर स्टे हैप्पी काम कर बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू